Yeah, so we'll be live in like 2 seconds. Okay. So we'll start. We're live now. Okay, is everybody ready? Can we start? Okay, so we are starting. So I'll speak in Hindi and English mix so that all of our listeners can understand. I think one of our speakers is missing. I hope somebody can follow up with Harsha. So welcome everybody, welcome and welcome to this Yuva Samvad. As you know, NAPM organizes a Yuva Samvad every week on different topics, and this time the topic is on GM mustard. सब लोगों का स्वागत है, आपका थैंक यू यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए इस युवा संवाद में। जैसा कि आप जानते हैं NAPM हर सप्ताह एक युवा संवाद ऑर्गेनाइज करता है अलग अलग मुद्दों पे। तो इस समय इस टाइम पे हमारा जो मुद्दा है वो है GM मस्टर्ड। और GM मस्टर्ड न्यूज में बहुत छा गया है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो GAC करके एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में काम करती है, उसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। और ये जो है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अलग अलग नियम बनाती है। उसने अचानक से GM मस्टर्ड को क्लियरेंस दे दिया। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन चला है GM के खिलाफ। पहले कॉटन, फिर ब्रिंजल और अब मस्टर्ड। तो बहुत सारे अलग अलग इसमें आंदोलन और खूब सारे संगठन जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने काफी सालों से मस्टर्ड को, GM मस्टर्ड को ब्लॉक करके रखा हुआ था, लेकिन अभी सडनली उसको क्लियरेंस मिल गया है। तो तभी वो मुद्दा इतना मीडिया में आ गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पे एक स्टे ऑर्डर भी दिया हुआ है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी ये GM मस्टर्ड जो है उसको खेतों में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जब तक हमें पूरी तरह से ये इशू के बारे में समझ में नहीं आता तब तक इस पे स्टे ऑर्डर रहेगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत बड़ा कोर्ट केस चल रहा है काफी सालों से GM मस्टर्ड पर। तो जो पिटिशनर हैं उन्होंने कोर्ट के पास वो गए, प्रशांत भूषण जी जो उनके लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट के पास गए और बोला कि जल्दी जल्दी इसको रोक दिया जाए। ठीक है, तो मैं जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। वेलकम एवरीबडी, welcome to this discussion on GM mustard today. The topic is basically we're going to be talking about GM mustard, and the reason it's in the media now and it's become such a topical issue now is because the government body called GAC, which is the Genetic Engineering Appraisal Committee, which is part of the Ministry of Environment, suddenly gave a clearance to GM mustard. And as you may be aware that India has one of the strongest opposition, strongest social movements against GMOs, and that's why they have not succeeded in getting many different GM crops approved, and one of them is mustard. And there's been a long drawn court battle, and of course the battle has also been on the street, so many different groups and organizations are involved. So it was very sudden that this approval came from GAC. But the petitioners who have been fighting a court case have managed to get a stay order on it. So at the moment, the Supreme Court has said that we will not allow the planting of GM mustard. So at the moment, there is a temporary relief. But of course, the topic is very, very important, and we must talk about it, learn about it, because the struggle is going to be revived now. So before we start, very quickly, until the 10th November, Meera, can you please... Yes, and the temporary relief until the 10th November. Yes. So before we start, I'd like to inform you that we have 6 wonderful speakers. Since this is a Yuva Samvad, we have Yuvas from 6 different states from across the country, and they are going to be sharing with us
their reasons and their experiences as to why they believe that GM mustard should not be approved. And also they're also going to tell us about their different social movement efforts or different efforts. There could be research. Some of them are organizers. We'll hear from them as to what it is that they are doing to oppose GM mustard and GM in general. So as we hear from them, that is where we are going to learn about the different issues that are going to emerge as to why GM mustard should be opposed. I am not going to spell out those issues, but we will hear them. And then when we reach the end of our presentation, we will do a quick recap as to the major issues that we have heard. तो हिंदी में अभी हमारे साथ 6 युवा हैं, युवा साथी हैं, हमारे अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्यों वो जीएम मस्टर्ड का विरोध करते हैं, और वो ये भी बताएंगे कि वो किस किस अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं जीएम मस्टर्ड का विरोध करने के लिए। तो हम उनसे अलग अलग मुद्दों के बारे में समझेंगे। जीएम के बहुत अलग अलग, जीएम मस्टर्ड के का क्यों हमें विरोध करना चाहिए, उसमें बहुत अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, आर्थिक मुद्दे हैं, जैव विविधता जो है बायोडाइवर्सिटी के मुद्दे हैं, किसान अधिकार के मुद्दे हैं, आयुर्वेदा और शहद के बारे में जो हनी होता है उसके बारे में भी हम सुनेंगे। खूब अलग मुद्दे, ये सब उठ के आएंगे, और इसका हम अंत में रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या सुना, और क्यों हमें जीएम मस्टर्ड का विरोध करना चाहिए। तो ये आज का फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले मैं सारे जो युवा वक्ता है उनको बुलाऊंगी। सब 1-1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, आपका शहर, आपका स्टेट, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। सो आई विल इनवाइट all the 6 different speakers to please come. I will take your names one by one. Please tell us your name, your state, and your organization before we move forward. So first I'll invite Nachiket. सभी को जिंदाबाद। मेरा नाम नचिकेत है और मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी प्राथमिक सदस्यता एक यहाँ मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम का एक संस्था है, तो उसके साथ है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज नचिकेत एंड my primary affiliation is with an organization called the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, and I'm based out of Rajasthan. Shobha, please introduce yourself. Thanks, Nachiket. My name is Shobha. I'm from Tamil Nadu. I work, my organization name is Nilgiris, particularly Vulnerable Tribal Group Federation. I work with the tribal groups in my district in Tamil Nadu state. Thank you, Shobha. Dilip? Okay, I think Dilip is not right now with us. Is Harsha there right now? I guess not. Harsha, Yeah. there you go. Am I audible? Yes. Yeah. So I'm Harsha speaking from Hyderabad. I volunteer with Raitu Swarajya Vedika, and I'm also part of ASHA. We work on farmers' rights, and also I coordinate a farmer helpline called Kisan Mitra here in Telangana and Andhra Pradesh. Thank you so much, Harsha. Devrat? देवव्रत आप हैं? हाँ, मैं हूँ जी। हाँ, तो आप मैं देवव्रत शर्मा लगभग 1991 से बीकीपिंग कर रहा हूँ, और सरसों के साथ हम विशेष तौर से हमारा लगाव है, और हमारा जो लगभग 60-70% हनी है वो सरसों से ही आता है। और मैं कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे साथ लगभग पूरे देश भर के बीकीपर सभी स्टेट्स के जुड़े हुए हैं। और विशेष तौर से हमारी जो सरसों की खेती है उसी से मैक्सिमम हनी मिलता है, और वो पूरा हनी हमारा एक्सपोर्ट हो जाता है अमेरिका को या और दूसरे कंट्री को। तो जीएम सरसों के आने के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट आएंगे, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में मैं एक रेजिडेंस भी है, और जो हमारी कन्फेडरेशन ऑफ एपीकल्चर इंडस्ट्री है वो भी हमारी राष्ट्रीय लेवल पे वर्क कर रही है बीकीपर्स के लिए। थैंक यू सो मच देवव्रत। हम और सुनेंगे जब आप बात करेंगे, तब आपके संस्था के बारे में भी सुनेंगे और आपके काम के बारे में भी सुनेंगे। गीता, आई थिंक गीता महाराष्ट्र से हैं।
गीता, आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लीजिए। I think Geeta might be facing some problems. There you go. Hello. Okay. Yes. Hi, Geeta. We can hear you. Yeah. So So we just want to hear your name, your state, and your organization. yeah, so I'm Geeta and I'm from Maharashtra and I'm an independent researcher on agriculture and agriculture related issues. Okay, thank you very much. और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई. My name is Ashlesha and I am also from Maharashtra originally, and I am connected to many different groups and alliances. One of them is the GM Free India Coalition. So that is, of course, I should mention that it is the main coalition in India which brings together many different organizations and movements, and this coalition has been the one which is putting up the major fight against GMOs in India. So I hope all of you will also join, and we will also share the link so you can also learn about GM and all these issues very clearly. There's lots of resources on that page. तो अभी हम start करते हैं. What I'll do is first just give you a quick recap as to this GM mustard issue, the regulatory position, what's happening with it. बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि GM मस्टर्ड के साथ मेन इशू क्या हुआ है कोर्ट में. और सबसे पहले ये है, हैंग ऑन 1 second, माय नोट्स आर मिसिंग. यस, तो मेन चीज ये है कि जो GM मस्टर्ड है उसको हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और जो पार्लियामेंट है दोनों ने टेक्निकल कमिटीज बनाई थी और उन्होंने कहा था कि GM मस्टर्ड है, आप उनका भी परिचय कराइए प्लीज. अमित धानुका जी. सॉरी, किसका? हेलो. ओके, आई थिंक किसी ने गलती से बोला है. ठीक है, तो आई विल गो बैक. हु स्पीकिंग? कौन बोल रहा है? मैं देवव्रत शर्मा बोल रहा हूँ. हमारे साथ अमित धानुका भी हैं, आप उनका भी जरा परिचय कराइए प्लीज. अच्छा, कहाँ है अमित धानुका? वो तो अभी हमारे साथ है, इसी में जुड़े हुए हैं अभी. नहीं, वो स्पीकर नहीं है, तो मैं अभी नहीं कराऊंगी उनका परिचय. तो हम कंटिन्यू करते हैं. आप स्पीकर हैं तो आप जब आपका टाइम आएगा तब आप बोलिएगा. तो मैं कंटिन्यू करती हूँ. सबसे पहले मैं बोल रही थी कि अभी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दोनों ने टेक्निकल कमिटीज बनाई थी और वो स्पेशली GM मस्टर्ड को देखने के लिए. और उन दोनों कमिटियों ने बोला है कि GM मस्टर्ड जो है इसे हम नहीं अप्रूवल दे सकते क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं. सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो GAC, जो बॉडी, जो संस्था है जो न्याय बना रही है, उसमें बहुत ही वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, हितों का जो टिकाव होता है उसमें GAC में जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो बैठ के नियम बना रहे थे, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उसके ऊपर जो टेस्ट, जो आवश्यक, जो अलग अलग परीक्षण करने होते हैं वो GAC कर नहीं रहा था. और उसके ऊपर वो बोल रहे थे कि जो GM मस्टर्ड है इससे बहुत बड़ा यील्ड बनेगा. और यील्ड बनेगा क्योंकि भारत में बहुत इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, क्योंकि हमारा जो तेल है ज्यादा से ज्यादा भारत इंपोर्ट कर रहा है और वो भी बाहर देशों से इंपोर्ट कर रहा है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो ये कह रहे हैं कि हम GM मस्टर्ड को डालेंगे और इससे यील्ड बढ़ेगा. तो ये तो बहुत ही गलत क्लेम है क्योंकि हमारे जो कोalition है GM फ्री कोalition, उन्होंने दिखा दिया है कि बहुत अलग अलग टाइप के वेराइटीज हैं, स्पेशली हाइब्रिड, जो GM से भी ज्यादा उनका यील्ड है. तो ये यूजलेस उनका रीजन था. और फाइनली सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि 10 साल तक GM मस्टर्ड पे मोरेटोरियम लगा जाए, उस पे रोक दी जाए क्योंकि ये हर्बिसाइड टॉलरेंट है. हर्बिसाइड टॉलरेंट के बारे में हम सुनेंगे, दिलीप स्पेशली बात करेगा उसके बारे में. तो उसकी वजह से जब सारी कमिटियों ने बोल दिया है कि इस पे रोक लगाई जाए, GAC ने इसको कैसे अप्रूवल दे दिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्विकली इन इंग्लिश,
I just want to talk about the regulatory problems with the way the GIAC has approved the GM mustard. Number one, the Supreme Court and the Parliament both had technical committees appointed that was supposed to look into GM mustard. Both these committees have clearly said that we cannot give clearance to GM mustard because of many issues. One of the issues is that GIAC is riddled with conflict of interest. Many of the industry peoples were part of the GIAC while making decisions. Secondly, they said that the GIAC did not do the tests that were required. So they were doing all kinds of wrong tests. So we cannot give clearance if they're not doing the proper testing. The third one, the GIAC is claiming that the yields of GM mustard are very high. But the coalition, GM-free coalition, has already shown that that's not the case. We have many other varieties which are showing way higher yield than this GM mustard. And many others, they are outperforming this GM mustard. And finally, can people hear me? I'm frozen on the screen. Oh, I think you all can still hear me. So I will continue. Can you hear me? Yes, Ashleisha. Okay, fine. So anyway, I will continue. So these are the issues, and because of which the Supreme Court Technical Committee and the Parliamentary Technical Committee have both said that we cannot give a clearance, and that's why they had put GM mustard, particularly because of its herbicide tolerance nature, on a 10-year moratorium. But still the GIAC went ahead and gave it a clearance. So there's a clear problem with the way that they have done this. There are major procedural flaws, and this is where it stands right now. So now we are going to hear from all of our different speakers. First, I would like to invite Shobha Madan from Tamil Nadu. Shobha, please tell us as to why you think that GM mustard should be opposed. And Nachiket will help to translate from English to Hindi, make a summary at the end of Shobha's presentation. And Shobha, please also tell us as to what you all have been doing to oppose GM in your state and in your region. So welcome, Shobha, please go ahead. Thank you for the invitation for this meeting and to talk about indigenous practices in my region. And I would like to share about why GMOs is wrong. Wrong means it's wrong. So I wanted to share why. So here I work with land, territory, and natural resource management for the Adivasis. So I just want to start with the story I hear from my elders. Here, we have our own way of natural resource management and traditional sustainable farming practices, which is, my grandmother used to say when they were young, when they're growing the crops, it grows as long as our forearm without using any fertilizer and chemicals. Actually, those days, the food was tasty and healthy. Nature had own seasonal food producing habits, even when they cultivate any millets. After harvesting millet, they used to keep the soil for resting. Resting means it giving rest to the microbes to regenerate for next cultivation. This is the practices my grandmother used to say us. The soil had, or a nature have, its own way of food producing. So people were healthy and not greedy.
over a period of which I want to say, a new technology and development aspect, it's leading to human, whatever they produce, they want it more and more. It leads to the harm. Anything beyond the nature, anything what we create, artificially create, it is harm for the human. And also, I think I used to hear from elders, I used to hear from my friends, anything, the GMOs, genetically modified organism, I think this many years, which they are produced, many things are not success. So, which means here itself we can understand that the GMOs, it's going to be more causing problem than the good cause for the people. And also we can see, and also like how I see as a mother earth, the soil, if we harm the soil, it also revert us. I think we're facing now the climate changes also. We are against the nature, how we say, emitting more carbon dioxide, that is leading to the climate change. We are not now, we're facing, because of this artificial producers, how much we are affected. So these are things I want to share. And also, as being in India, democratic country, how a country can take decision which is all the farmers doesn't want to practice here. This is a one way of enforcing these farmers to convert into GMOs. I think it is wrong, actually. Wrong means it's a wrong again. It is injustice to the earth as well as the farmers. In a way of indigenous perspective, I want to share, we cannot allow GMOs to introduce our soil. With knowing this will cause for the earth, and we shouldn't allow because we know that how it's going to be affecting us. And also, it is not fair that the government, there are many environmentalists, there are many scientists who are opposing these GMOs. Without their consent, without the farmers' consent, the government shouldn't take any decision making for doing these GMOs. And these are things I want to share. I want to share here, we should respect and promote native seeds in India. And this is only going to be sustainable. This is only going to be food for us and for generations. So these are things I want to share. And leave the soil as it is. Nature has its own way of producing and feeding us. So this is the note I want to give, and thank you for the opportunity. Thank you. Thank you very much, Shobha. Nachiket, are you able to do a very quick overview of what Shobha said? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. हाँ, तो शोभा तमिलनाडु में नीलगिरी इलाके में काम करती है, वहाँ की आदिवासियों के साथ, और वहाँ जमीन को लेके और प्राकृतिक संसाधनों की मैनेजमेंट पे काम करती है. तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि कैसे पूर्वज उनको क्या कहते थे और पहले किस तरीके से खेती होती थी, और उन्होंने कहा कि बिना किसी रसायन का खेती होता था, और कैसे मिलेट्स को, यानी जिसको हम मोटे अनाज शब्द से समझते हैं, तो उसका एक फसल लेके फिर उसके बाद खेत को खाली छोड़ते थे ताकि उसको वापस अपनी उपजता वापस उपजाऊ शक्ति वापस आए, तो एक तरीके से मिट्टी को आराम देते थे.
और ऐसे करने से उस वक्त खाने की स्वाद भी अच्छी थी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा था और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। लेकिन अभी एक मानवता में हम और ज्यादा हम चाहते हैं कि हर चीज बहुत हमें ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा पैसा हो, और एक तरीके से हर चीज की लोभ बढ़ी है, और इससे हर चीज की विनाश हो रही है। और अप्राकृतिक तरीके से, जैसे ये पूरा जीन का टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, तो ये अप्राकृतिक है, और कुछ भी अगर अप्राकृतिक अप्राकृतिक है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने कहा कि अभी तक जितने और जीएम फसल आए हैं उनमें से कोई भी फसल अभी तक सफल नहीं हुआ है। और कह रहे थे कि धरती एक तरीके से हमारी माँ है, और इस तकनीक से मिट्टी की हम विनाश कर रहे हैं। और ये भी याद दिलाया कि हम भारत अभी एक लोकतंत्र है, और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हम पे थोपा जा रहा है एक लोकतांत्रिक देश में। और एक आदिवासी नजरिया से वो कह रहे थे कि ये गलत है और ये अन्याय हो रहा है। वैज्ञानिक भी इसके खिलाफ हैं और किसान भी इसके खिलाफ हैं। तो आखिर में इन्होंने ये कहते हुए अपनी बात रखी कि हमें देसी बीज को इसकी आदर करनी चाहिए और इसी को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इस तरीके के जीएम बीज। Thank you very much, Nachiket. And now I would like to call you, Nachiket, from Rajasthan, and to give us a bit of perspective from the Rajasthan state and why you think GM should be opposed. Over to you. या सो आई विल जस्ट मिक्स अ बिट, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैं बात करूंगा। तो मेरे हिसाब से जो ये जीएम फसल है, ये हर तरीके के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसान हो, चाहे उपभोक्ता हो, या पर्यावरण भी हो, किसी के लाभ का नहीं है, ये सिर्फ कंपनियों के लिए है। So this whole technology will neither benefit farmers nor consumers nor the country. Really, the only reason it is being pushed is to promote corporates. अगर किसानों की नजरिया से हम देखेंगे तो ये वैसे हर्बिसाइड टॉलरेंस जो खरपतवार नाशक का इसमें सहनशीलता है, ये सह सकता है, जो हालांकि वो एक जहर है, लेकिन बाकी पौधे उसको सह नहीं पाएंगे, लेकिन ये सह पाएगा। तो इससे जो किसान ये जहर को अपने खेत में डाल रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर जो किसान इसको, या जो ये जहां उगेगा उसके अगल बगल के जो किसान हैं, उन पे भी ये असर पड़ेगा। और जैसे आश्लेषा भी कह रही थी पहले, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो जीएम सरसों का भी रिलीज होने की बात हो रही है, इससे पैदावार बढ़ेगी। इनके खुद का जो डेटा है, इन्होंने तुलना किया है उन प्रजाति के साथ, उन वैरायटी के साथ जिसका पहले से ही पैदावार कम है, और उसकी तुलना में वो कह रहे हैं कि इसका ज्यादा है। हालांकि इससे और ज्यादा तो बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं जो इससे भी ज्यादा पैदावार देते बिना इस जीन टेक्नोलॉजी का। So one thing is, of course, that because of herbicide tolerance, which I think there's another speaker who will talk about it, so I won't go into detail, but just from a perspective of how it is not good for farmers, apart from the farm in which it is being grown, because herbicides are basically poisons, I mean, they will also affect neighboring farmers. And the testing that has been done, when they claim that this is going to improve yield, essentially what they have done is they have compared the yields to varieties which are low yielding, and then saying that this is a higher yielding variety, whereas they should have benchmarked it against the varieties which already have higher yields, even more than this GM mustard.
So they have sort of rigged the game and compared it to low yielding varieties rather than trying to improve upon the varieties which are already giving higher yield. इसके अलावा इसमें ये भी है कि जो किसान, जैसे शोभा भी कह रही थी, जो देसी बीज उगाते हैं या जो अपना बीज बचाते हैं, अगर सरसों का अपना बीज हर फसल में बचा के अगले साल फिर उसकी पैदावार के लिए वो अपना बीज दोबारा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये जीएम बीज से ये होगा कि वो फैलते फैलते, अगर मैं अपने खेत में जीएम बीज लगा रहा हूँ और मेरे बगल में कोई किसान है जो देसी बीज उगा रहा है, तो इससे वो एक पॉलिनेशन होके कंटामिनेशन वो देसी बीज का भी होगा। मतलब अगर कोई देसी प्रजाति है और वो जीएम प्रजाति के बगल में उसको उगाया जा रहा है, तो वो देसी प्रजाति में भी इसके इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये उससे उसमें भी फैल जाएगा, तो एक तरीके से कंटामिनेशन होगा। और ये जिन्होंने इसको डेवलप किया है वो खुद भी इन्होंने माना है कि इसको एक बार जब इसकी बिजाई हो जाएगी तो इसको सीमित नहीं रख पाएंगे, और इसमें ये एक तरीके से इसकी चरित्र में ये है कि ये फैलेगा, तो जो दूसरे प्रजाति है उन पे भी ये असर करेगा। और इस तरीके से, क्योंकि इस जीएम वाले जो इन्होंने डेवलप किया है वो ऐसा एक प्रजाति है कि आप इसको बचा के अगले साल दोबारा इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे देसी बीज में है कि किसान अपने बीज खुद बचा के फिर इसको अगले साल दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि आपने इस साल उगाया, फिर भले ही आप इससे जो बीज आते हैं इसको बचा के आप अगले साल लगाएंगे भी, तब भी आपकी पैदावार इतनी आएगी नहीं। तो एक तरीके से किसानों का बाजार पे निर्भरता बढ़ाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसान बार बार कंपनियों से खरीदे और इससे कंपनी अपनी प्रॉफिट बनाए। और दिक्कत वाली बात यह है कि अगर कुछ किसान ऐसे करना चाह रहे हैं उनकी मर्जी है, लेकिन जो किसान नहीं करना चाह रहे हैं ये जाके उनके बीज को भी इफेक्ट करेगा, उनके बीज पे भी असर होगी इसकी। So the other way that this will affect farmers is, even if there are farmers who have traditional varieties or who are seed savers, who every harvest they save the seeds and then again plant it again the next season. This technology, and it has even been admitted by the developers, is such that it will spread, it will cross-pollinate, and it is going to contaminate other varieties also. And in this way, because of the technology that is built into this variety, even those who are saving their own seeds, over time their seeds will not have the same potential that it used to have earlier, and all farmers will slowly be forced to start buying seeds from the market. So essentially, they are trying to increase the dependence of farmers on the market, and therefore to ensure they have regular sales and therefore regular profits. Apart from this, again, I'm sure Dinesh will talk about this, so I won't go much into it. But this is a herbicide-tolerant variety, and therefore, from a consumer point of view also, like I said, these are basically poisons. They are carcinogens, and you're going to have residues on the plant. In North India, they even eat the leaves. Apart from that, you will have residues coming into the seeds and later on into the oil, into our bodies. So from a consumer point of view also, this is not really healthy to be consuming this. तो अगर उपभोक्ता की नजरिया से अगर हम देखेंगे तो इसमें जो खरपतवार नाशक है वो एक तरीके से जहर है, और ये जहर अगर हम छिड़काव इसकी कर रहे हैं तो सरसों का तो हम साग भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, और इसके अलावा ये जहर ना सिर्फ पत्तों पे रहेगा लेकिन धीरे धीरे ये बीज में भी आएगा, बीज से तेल में भी आएगा, और इस तेल का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे शरीर में भी ये जहर आने लगेगी। और ये खरपतवार नाशक ऐसे रसायन है कि इससे कैंसर जैसे रोग भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर पर्यावरण के लिए भी देखेंगे तो जो मधुमक्खियों पे असर पड़ेगा तो वो तो और लोग वक्ता हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन खरपतवार नाशक
एक ऐसा रसायन है कि खरपतवार को तो मारेगा ही, लेकिन उसके अलावा ऐसे और कई सारे पौधे हैं जो खेत में उगते हैं और उनको भी जाके जो जिसका सरसों से कोई लेना देना नहीं है और अगल बगल खेत के बगल में भी वो अगर उग रहे हैं तो उन पे भी अगर ये जब छिड़काव कर रहे हैं उन पे भी पड़ेगा तो वो भी उनका भी विनाश होने लगेगा, तो पर्यावरण के लिए भी एक अच्छी चीज नहीं है. So even from an environmental point of view, how it is going to affect bees, I will let Devrat Sharma ji talk about it. But otherwise also from an environment point of view, if you have an herbicide tolerant variety which is going to encourage use of herbicides which are essentially just poisons, then in beyond weeds, it is also going to affect other crops, other species which are not necessarily harmful for agriculture or for farmers. So even from an environment point of view, this is not beneficial. So if you look at it, apart from those companies that want to sell the seed, this is not really going to be benefiting anybody. Or abhi, since I am based in Rajasthan, I will also just talk a little bit about things that are happening in Rajasthan around this. Again, the beekeepers have protested. I will not talk about that because I think they will talk about it. But just a little bit of context that Rajasthan is the state where maximum mustard production in the country takes place. So the mustard production in Rajasthan is higher than mustard production of any other state taken separately. And so it is very important that Rajasthan, the state or the state government opposes this. So therefore, we have been trying to engage with the state government. We have given a letter to the CM through the CMO, a letter stating the reasons that this should be opposed and requesting the government to take a stance against this. Bengal has already done so. And even earlier, this is not the first time that they have attempted to introduce GM mustard. And earlier also when trials were being attempted, back then also the Rajasthan government had denied permission to hold trials in Rajasthan. So we are requesting them to do this again. And because Rajasthan grows almost half of the total mustard production in India, even the trials that they are planning, about half the trials I think are being planned in Rajasthan, specifically in Bharatpur and Ganganagar districts. And from the reports that I have been hearing, actually some sowing has already taken place. So therefore, it is very critical that all over India, but especially in Rajasthan also, we raise our voice against this. तो चूंकि मैं राजस्थान में हूँ, थोड़ा राजस्थान के संदर्भ में मैं रखूंगा. तो देश में अगर हम देखेंगे तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा सरसों उगाया जाता है. लगभग देश की आधी पैदावार राजस्थान में होती है. और अभी जो ये शोध के लिए कह रहे हैं कि जीएम सरसों की बिजाई हो सकती है, तो इसका भी काफी ज्यादा जो शोध के लिए जो ट्रायल होंगे ये भी शायद राजस्थान में ही होंगे. और ये जो केंद्र सरकार के कृषि केंद्र हैं, वो शायद भरतपुर जिला और गंगानगर जिला में ये बिजाई करने का सोच रहे हैं शोध के लिए. और जहाँ तक मेरी समझ है शायद ये बिजाई हो भी चुकी है, ऐसे सुनने को आया है. तो इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है जब जीएम सरसों की लाने की कोशिश की गई है. और पहले भी जब ऐसे ट्रायल के लिए, शोध के लिए जब वैज्ञानिक इसकी बिजाई करना चाह रहे थे, तो तब राजस्थान सरकार ने भी तब कहा था कि आप हमारे राज्य में ये नहीं कर सकते. दूसरे राज्य का तो खैर राजस्थान सरकार कुछ कह नहीं सकती, लेकिन कम से कम पिछली बार जब ये हुआ था तो राजस्थान सरकार ने ये कदम लिया था और उन्होंने साफ साफ मना किया था कि आप ये ट्रायल्स हमारे यहाँ नहीं कर सकते. तो हम चाह रहे हैं कि राज्य सरकार दोबारा ऐसे एक कदम ले
तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, सौंपा है उनके दफ्तर द्वारा। परसों हमें से कुछ लोग गए थे मुख्यमंत्री के कार्यालय में, और वहाँ सचिव को हमने चिट्ठी सौंपी है, और मुख्य सचिव को भी एक चिट्ठी सौंपी है कि राज्य सरकार ऐसे कदम ले। तो चूंकि राजस्थान इस खास करके इस फसल के लिए कितनी महत्वपूर्ण राज्य है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि यहाँ के लोग इस पे और अपनी आवाज उठाएं और विरोध करें। तो विद दिस आश्लेषा आई विल कंक्लूड फॉर नाउ। थैंक यू सो मच नचिकेत। और आपने बहुत अलग अलग दृष्टिकोण भी लाए, उसके लिए भी थैंक यू। ये सब हम जब कंप्लीट कर रहे होंगे प्रोग्राम, तब हम पूरा एक लिस्ट बनाएंगे कि हमने क्या क्या सुना आज। सो नाउ आई विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, एंड दैट इज दिलीप from Kerala. Dilip was not there. Dilip was not there when we did the initial introductions to everybody. So Dilip, please introduce yourself. Tell us your state, your name, your organization, and then I also invite you to make your presentation as to why you think we should oppose GM mustard. Go ahead, Dilip. Okay, thank you so much for giving me an opportunity to join this webinar. Am I audible? Hello? Yes, we can hear you. Okay, okay, thank you so much. Myself, Dilip Kumar, and I'm from Kerala. Basically, I'm a zoologist and a public interest researcher, extensively looking at or working on pesticide-related issues in India. I have also completed a postgraduate diploma in pesticide risk management from the University of Cape Town, South Africa earlier. And since 2013, I have been working on or especially documenting adverse effects of agrochemicals in India. Mainly, we are focusing on pesticides, which includes insecticides, weedicides, fungicides, plant growth regulators, and of course, this herbicide is already there. Basically, I think related to mustard, not only mustard, I think we not at all need any GM crops or genetically modified crops. And I think I have a couple of points to make. One important issue is that we have been saying that this agrochemical industry is a sunset industry. There is nothing more for them to advance or something to do that. But of course, they are trying to do their business or trying to proliferate their business and profit by bringing new kind of technologies or tools. And one of the major tool nowadays they use is genetic modification of crops, which of course it is coming with the herbicide tolerant crops plus the agrochemical or the herbicide which can be applied on these crops. So the twin profit of making profit from seeds and agrochemical, the herbicide is already there, and that's what they are exploring nowadays. And whether it is the research and development is happening, whether at government level or private sector, doesn't matter. Actually, industry is pushing for this. And I would like to highlight a couple of points why we do not need genetically modified crops, of course, GM mustard. One is the pollution and adverse effect, the herbicide that causes to the ecosystem, the people, biodiversity, and everything. Already some studies that happened in places where these genetically modified crops are cultivating, especially in USA and some parts of Europe and all, where glufosinate is also being used on crops such as mustard, soybean, and corn as well. And the studies have shown that groundwater has been polluted with glufosinate residues, and soil is also polluted with these residues, and not much studies has happened on this aspect. However, we can actually we can think that this thing actually causes pollution at a broader level, including soil, water, biodiversity, food web, and of course it's ultimately it is reaching to us human beings as well, among other animals.
So it is there, and this agrochemical, especially glufosinate, for which this GM mustard is tolerant, is persistent as well. So continued use of glufosinate or generally herbicide, which is applied on herbicide tolerant crops, causing much damage to our environment, which is a basic thing where all life in the earth is sustaining, including for human beings. So a couple of points like the application of herbicides on GM crops will actually deteriorate soil microbial activity, soil enzyme activity. So it at the end it will be causing a kind of dead soil, which is unable to support or which actually loses the causing to loses the productivity of the soil, and farmers, of course, they wanted, maybe they have to use more and more agrochemicals or fertilizers to get an expected yield. Of course, the promise of yield for GM crops is a false, and we already know this fact from the GM, the BT cotton in India. Then I think the other major point is health effect of these herbicides used on herbicide tolerant crops. I'll talk about a couple of points directly on glufosinate. And glufosinate is generally it causes neurotoxicity and reproductive toxicity among animals, and there are also some studies points that it can affect development of fetus among human beings as well, or mammals. So studies are there that this can cause reproductive toxicity and neurotoxicity. I think for a long time, once it was introduced in the market, or at least for the research and development, this herbicide was not allowed for use on agriculture sector because of its toxicity. But nowadays, of course, this pesticide industry proliferation is happening through government policies, so other mechanisms and all, and it came into our agriculture sector, and this is happening. One problem is the drift happening from the use of herbicides on the crops. So during the time of spraying, it is drifted through wind. It can reach us far away places, and it can directly cause exposure to people, animals, and vegetation, which obviously includes biodiversity that support our food. And a major point is that we know in rural or agrarian community, non-cultivated edible leafy vegetables, there are so many plant species which are used as food resources by these indigenous communities, and this food resources is affected. One is direct exposure, which deposits the toxic substances such as glufosinate, for example, on the leaves, and if a community feed on this, of course they are going to affected, and with, of course, long-term health effects such as neurotoxicity, which can hamper or impair the development of nervous system and functioning of nervous system, which can be manifested as serious health issues, and for which no cure or no treatment is available in any medical streams. That is a major thing we need to know about. Then second thing is that this weedicide, the applied weedicide, of course, can contaminate water resources through runoff. With rain, it can contaminate water resources, including lake, ponds, and of course, this herbicide can penetrate into groundwater as well. So this is happening, and residues of glufosinate in groundwater has been reported from a study conducted in China. And another major problem is contamination of other crops. Of course, as such, I think the previous speaker already mentioned that contamination of crops growing neighboring area of GM mustard. So this contamination can happen. Sorry. And if I can talk about a bit more, I think I would like to highlight a couple of things on glufosinate. Glufosinate is actually a highly acute toxin, which is the World Health Organization categorized it as a moderately hazardous pesticide based on its acute toxicity, but its chronic toxicity has not been considered. Coming to the chronic toxicity,
An important point I mentioned earlier that neurotoxicity and reproductive toxicity are the two major problems, which of course can couple with other intoxication or other pesticides or other things which we encounter in our day-to-day life. So it will aggravate the health risk of communities, including consumers, not only farming community, but consumers can also be affected. Then the other point is, of course, data shows that poisoning with glufosinate can show up symptoms such as dizziness, convulsions, loss of consciousness, etc. And it is to be noted that there is no antidote available for glufosinate ammonium. There is no antidote. In case of an adverse effect or kind of poisoning happened, there is no way to cure it other than treating it symptomatically, which can be dangerous as well. So this is a major point, and I think the globally harmonized system of classification has already shown that glufosinate ammonium is harmful if swallowed, harmful in contact with the skin, and it can cause severe skin burns and eye damage. It may cause an allergic skin reaction, and it can cause a serious drowsiness or dizziness among people who are exposed. It may damage fertility, and it is a suspected of damaging the unborn child, referring to its reproductive toxicity, and it is a kind of organ toxin as well. Means it can damage functioning of various organs in our body, and the same mechanism of action it working on plants is applied to human beings or animals as well, and it's a neuro function inhibitor, and the same inhibition can happen in animals as well. And if you look at the regulatory point of information on glufosinate ammonium is already banned in 29 countries, including most of the European nations. And I think Pesticide Action Network has classified it as a highly hazardous pesticide owing to its reproductive toxicity and neurotoxicity. And in India, glufosinate ammonium is currently it is registered only for tea and cotton and not for mustard. Mustard is not there, but I think the next step from the industry will be to get approval for use of glufosinate ammonium in mustard. So anyway, this will be happening. I'm afraid of this. Industry might have already started their work on this. And it is approved only for tea and cotton, and the Food Safety and Standards Authority has set maximum residue limit in tea. But we do not know what is the extent of contamination of food resources with glufosinate or other herbicides in India, because residues of herbicides are not being analyzed for food crops in India generally. I think earlier when this glyphosate issue was there, the Food Safety and Standards Authority did some testing on imported food items, but not for food items or other even environmental samples in India. So we literally do not know the extent and level of contamination caused by herbicides in India. So this is a gray area. We do not have information. So I am afraid because of these pesticides, a large portion of the agriculture soil, our agriculture produce might have been contaminated. So this is a major risk we might have been experiencing. Then I think in 2016, the ICAR has conducted a study and they released a report on herbicide status of herbicide used in India, and their report showed that glufosinate ammonium is being used in several crops, which is of course a violation of national approved use of glufosinate, and the crops such as rice, vegetables, sugarcane. So there are a list of crops they already mentioned in their report, and this they reported it from I think it is happening in a kind of 11 or 12 Indian states. So this is also there, means a violation of national approved use of pesticide is already happening with the herbicide glufosinate, and of course many other pesticides as well. So there is nobody is looking at what is herbicides or generally pesticides are registered for and what it is recommended for and what it is approved for. This is the regulatory mechanism is actually kind of silent on this major
aspect. I think I just stop here. I think I can maybe I can come later if I'm permitted to. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you so much, Dilip. That was a very, very enlightening presentation. And thank you for bringing all the perspectives of toxicity, which I think are really important for everyone to learn about. And it's very, very worrisome. So, Nachiket, please Hindi में अनुवाद कीजिए. Over to you, Nachiket. जी, मैं थोड़ा संक्षेप में जो दिलीप ने बात रखी वो मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। तो दिलीप केरला में रहते हैं, केरला में काम करते हैं और ये एक जनहित में शोध करने वाले जनहित में शोध करते हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई दक्षिण अफ्रीका में की है और 2013 से ये इस पे शोध कर रहे हैं कि ऐसे रसायन से खरपतवार नाशक जैसे रसायन से क्या क्या हानि हो सकता है, किस तरीके से हानिकारक है। तो शुरुआत में इन्होंने कहा कि ये जो पूरा खेती में जो रसायन की इस्तेमाल होती है तो ये पूरा जो इंडस्ट्री है एक सनसेट इंडस्ट्री, यानी जो नए इंडस्ट्री आ रहे हैं तो उनको सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं कि इनका अभी एक लंबी आयु है और बहुत इनका भविष्य दिख रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एक सनसेट इंडस्ट्री है, यानी इनकी बहुत ज्यादा और लंबा नहीं चलने वाला है। और वो कह रहे थे कि ये जो जीएम तकनीक है ये सबसे नया इनका चाल है एक तरीके से। और जो जीएम सरसों है ये एक खरपतवार को इसमें खरपतवार सहने की शक्ति है। तो इस वजह से जैसे ये जीएम सरसों बिकने लगेगा तो वैसे वैसे इसके साथ जिस खरपतवार की सहनशीलता है इसमें, तो उस खरपतवार को भी ये बेचने लगेंगे इंडस्ट्री। तो जीएम सरसों का विरोध क्यों करना चाहिए, इसके लिए वो फिर उन्होंने वजह गिनाया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खरपतवार से प्रदूषण फैलता है और यूरोप और अमेरिका में जो शोध किया गया है उसमें दिखाया गया है कि जो ये खरपतवार जिसको ये जीएम सरसों सह सकता है उस रसायन का नाम ग्लूफोसिनेट है। तो यूरोप और यूएस में ये पाया गया है शोध में कि ये ग्लूफोसिनेट फिर अलग अलग जैसे ही इसकी इस्तेमाल की जाती है तो ये अलग अलग जगह प्रदूषित होकर फैलने लगती है। तो ये जो जमीन के अंदर जो पानी होती है उसमें पाया गया है, मिट्टी में पाया गया है और धीरे धीरे पूरा जो हमारा खाने में भी आने लगता है और फिर हमारे शरीर के अंदर भी आने लगता है। और इन्होंने कहा कि ये ग्लूफोसिनेट परसिस्टेंट है, यानी ये जल्दी ये जल्दी चला नहीं जाता है। यानी अगर हमारे शरीर में ये आ गया तो ऐसा नहीं कि हमारा शरीर इसको निकाल पाएगा और हमारे शरीर में ही रहेगा। और जैसे जैसे हमारे शरीर में और ग्लूफोसिनेट ये रसायन और हमारे शरीर के अंदर आते रहेगा तो ये जमा होते रहेगा, शरीर इसको निकाल नहीं पाएगा या इसको दूसरे किसी चीज में इसको बदल नहीं पाएगा और ये रहेगा हमारे शरीर में ऐसे ही। और ऐसे ही सिर्फ शरीर में नहीं, ये मिट्टी में भी ऐसे ही रह जाता है और मिट्टी में रहने से फिर जो मिट्टी में जीवाणु हैं उन पे भी असर करता है और धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, मिट्टी एक मरियल हो जाती है, उसमें कोई उपजाऊ शक्ति नहीं बचती है। और ये भी एक तरीके से देखे तो इससे भी कंपनियों का ही फायदा होता है क्योंकि फिर और रासायनिक खाद डालना पड़ेगा उपज के लिए। तो इस तरीके से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनियों के लिए ये इसकी विनाशकारी विश करने को उस कंपनियों का फायदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ये ग्लूकोज का क्या क्या असर पड़ता है।
ये अलग अलग तरीके नुकसान करते हैं हमारे शरीर को। तो पहले ये है कि ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। तो जैसे हमारा ब्रेन है, ये पूरा नर्वस सिस्टम है, इस पे असर करता है और इसमें दिक्कत देने लगता है। और ऐसे ही पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हेलो, एम आई ऑडिबल? आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। Yes. या सॉरी सॉरी। तो ये हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी नुकसान करता है। तो अगर कोई गर्भवती महिला है तो जो बच्चा है वो बच्चे पे भी वो नुकसान करेगा। और ये जो पहले ग्लूफोसिनेट को खेती में इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं था, तो बाद में ही, क्योंकि ये सारे इसकी दिक्कतें हैं, तो इस वजह से सरकारों ने कहा था कि ग्लूफोसिनेट को खेती में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य पे असर करेगा। हालांकि उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल फिलहाल अगर हम देखें तो सिर्फ चाय और कपास में इसकी इस्तेमाल का परमिशन है। और इसके अलावा वो कह रहे थे कि जो जिसकी हम खेती नहीं करते हैं, ऐसे भी कई फसल है जो हम खाते हैं, उसको उगाते नहीं है, वो अपने आप एक जंगली तरीके से वो उगते हैं और उसको भी हम जंगल से जाके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं साग और अलग अलग पत्ते हम ये सब हम इकट्ठा करके आते हैं और इसको भी हम खाते हैं। तो जब ग्लूफोसिनेट जैसे रसायन हम इस्तेमाल करते हैं तो ये उन पे भी असर करेगा, तो सिर्फ खरपतवार पे नहीं, लेकिन ऐसे पौधे जो हम उगाते नहीं हैं, जंगली तरीके से उगते हैं लेकिन उसको हम खाते हैं, उन पे भी ये विनाशकारी असर रहेगा इसका। और विश्व में जो स्वास्थ्य का संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है जो पूरा स्वास्थ्य के पूरी दुनिया में जो स्वास्थ्य पे काम करता है, तो उन्होंने कहा है कि ये ग्लूफोसिनेट से अक्यूट टॉक्सिसिटी होता है, यानी एक अ, अ, अल्पकालीन वक्त के लिए, एक छोटे वक्त के लिए अगर ये किसी के शरीर में आ गया तो ये कम से कम समय के लिए तो दिक्कत करेगा, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। ये एक दीर्घकालीन इसका क्या असर रहेगा, एक लंबे समय में ये किस तरीके के असर करेगा, इस पे अभी किसी ने कुछ कहा नहीं है। हो सकता है एक लंबे समय में भी ये असर करे, यानी अगर मेरे शरीर के अंदर ये जाएगा तो तुरंत तो ये दिक्कत करेगा ही, लेकिन हो सकता है जिंदगी भर भी ये मुझे दिक्कत दे। तो ना सिर्फ किसानों पे लेकिन उपभोक्ता पे भी, सबके स्वास्थ्य पे ये असर करेगा। और इसके अलावा ये अगर ये हमारे शरीर में जाता है तो चक्कर भी आ सकते हैं, पेट भी खराब हो सकता है, और इसका कोई दवाई नहीं है। जो इसके लक्षण जब हैं तो लक्षण के लिए हो सकता है कुछ दवाई दे, लेकिन एक जड़ से अगर इसका इलाज करना है तो ऐसे कोई इसके लिए दवाई नहीं है। और ये अगर हम ये खाते हैं या मुंह से अंदर जाते हैं तब भी नुकसान करता है, और अगर ये सिर्फ हम इसको छुएं और हमारे स्किन पे आए तो तब भी ये नुकसान करता है। और कई देशों में ये ग्लूफोसिनेट जो रसायन है, बहुत सारे देशों में इसको बैन किया गया है, इसका इस्तेमाल करना वर्जित है। और भारत में इसको सिर्फ चाय और कपास में इस्तेमाल करने की परमिशन है। उसके बावजूद 2016 में जब ICAR है जो भारतीय पूरे देश भर में कृषि पे ये शोध करते हैं, तो 2016 में जब इन्होंने एक शोध की, उसमें पाया गया है 10 से ज्यादा राज्यों में, शायद 11 राज्यों में उन्होंने ये शोध की, और उन्होंने पाया कि जबकि इसको सिर्फ चाय और कपास की खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्होंने पाया कि धान में भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये दूसरे फसल में भी इसकी इस्तेमाल की जा रही थी। तो हमारे देश में जिसको हम
दवाई कहते हैं खेती में, लेकिन हालांकि वो दवाई नहीं, जहर है। तो ऐसे खरपतवार और या फफूंदक को मारने के लिए ऐसे जो रसायन हैं, इन सब का ढंग से कोई रेगुलेशन नहीं है, इसके नियंत्रण के लिए ढांचा नहीं बिठाया गया है। तो इसी बात से फिर उन्होंने अपनी बात पूरी की। तो मैं भी यहाँ रुकूंगा। श्लेषा। Thanks, Nachiket, or thank you for the fantastic interpretation work also that you just did. Now I would like to invite our next speaker, Sri Harsha from Telangana. Thank you so much for joining us, Harsha. I understand you're not feeling very well, so really appreciate that you can join us. And over to you. Please tell us why you think GM should be mustard should be opposed, and also tell us about what you all have been doing as RSV to oppose GM in your state. Go ahead. Yeah, I'm feeling better today. Thanks, Ashlesha, and thanks everyone who shared about the issue until now. Quickly, so we are a collective called Raitu Swarajya Vedika, work locally on farmers' rights issues and also on issues of farmers, like genetical modification of crops, which would hurt farmers in the long run. So going back. Sorry, Harsha, one thing. Are you able to do both Hindi and English mixed for your presentation? I can try. Yeah, please try. Please try. Thank you. Yeah. So हम राइतु स्वराज्य वेदिका एक मंच है जहाँ पे हम किसानों का समस्या, यहाँ पे अगर टेनेंट फार्मर्स का समस्या हो, नहीं तो जो किसान क्रॉप लॉस या से सफर होता है उसका समस्या हो, नहीं तो क्रॉप इंश्योरेंस की समस्या हो, जो भी है, नहीं तो अभी ये जेनेटिकल मॉडिफाइड इश्यू, जीएम क्रॉप्स की समस्या हो, मार्केट की समस्या, जो भी हो, हम यहाँ पे ये दोनों राष्ट्र में हम काम करते हैं और ये अलग अलग इश्यू को डिफरेंट वेज से फाइट करते हैं और फार्मर्स के सपोर्ट में वी हैव बीन स्टैंडिंग. I also coordinate a farmer helpline called Kisan Mitra, where we also gather individual issues. हम individual issues भी किसान मित्र हेल्पलाइन हम चलाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. उससे भी ग्राउंड लेवल इश्यूज हमको टच में रहते हैं उससे, और रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं. वी वर्क विद द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय trying to attempt to resolve these issues which we come across as a farmer helpline also called Kisan Mitra here. So quickly, I think so in 2011, the BT Brinjal campaign is when I think so the whole the community came together and made sure the voices are heard, and that is when even the Kisan, the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture came together as a platform, of which RSV is also a sister body here in Andhra and Telangana. So that time we had people who could hear our voices within the government. उस समय हमारा voice जो है government में, there were people जो हमें सुन रहे थे और eventually उसको moratorium दे दिया था BT Brinjal को. So that was the food crop which was first food crop which was trying to be pushed in India, and that is currently on hold. After that, GM mustard in 2016 they have tried to push it again in Andhra, Telangana. Even in 2011, when that was there, I think so there was a lot of campaign and people came together. Especially Brinjal is something which unites a lot of people. So a lot of people came together in different forms and ways and fought it and shelved it. When the mustard came in 2016, GM mustard which was tried to be pushed at that point of time. उस समय भी the point is यहाँ पे they don't cultivate, they don't यहाँ पे उगाते नहीं है GM mustard को ज़्यादा.
So how do politicians and other people connect to it is a bigger issue, especially in South India. Like Nachiket was saying, 48% of mustard is 48% of mustard is grown in Rajasthan, rest in other states. But यहाँ पे कम है. A few farmers do it here and there. So how to connect it politically is a big issue. But every tadaka we do, right? We first add mustard seed, right? Before you cook any curry, any dal, anything, you put a tadka here. You take some curry leaf, you put some mustard. At least I do some cooking, but मेरा cooking में तो ये पक्का रहता है. Not sure of others. So that I feel like in 2016 I remember when I was trying to campaign, my mom was able to connect to it very well. Right? Okay, this is an important issue. Mustard is so. Right, like that, many people across were able to connect to this issue in a because they use it very regularly, every day, day in, day out. In fact, दिन में 2-3 बार भी. So that was how we were able to campaign in 2016 by connecting a lot of community and gathering a lot of voices. इस टाइम भी वही हम कर रहे हैं. So luckily in 2016 again it got shelved and they asked them to do some more tests and get back without doing any more tests, which we progress ke bina, they are again back with the same lies, with the same flouted discussion about yield ज़्यादा है, right? Different concerns about oil imports and ये वो बोल के they are trying to they're entering the scene again. I hope if not the government, at least the case would stand in the Supreme Court and more people come out on the streets onto that. Just now Chennai has actually come out on the streets and there's a lot of civil society has come across. Am I audible? Yeah. Yes. Yeah. So a lot of civil society is also trying to come onto the streets. So recently, there's as we all know, the Bharat Jodo Yatra is happening in across the country. We are not looking at it as a Congress campaign, but we are looking at in the current times, we are looking at it as a campaign against hate, against various issues in the country, where a few voices are coming, from civil society, from even the political stream. Some voices are coming in support of the people's causes. So we thought, why should we not use this as a chance and raise this issue? So what we did was on November 1st, we tried to get in the Bharat Jodo Yatra, when Rahul Gandhi ji was walking, we got around 7 minutes with him in the yatra in itself, and we raised this issue. जब राहुल जी चल रहे थे, हमने पूरे पोस्टर लगा के नो जीएम मस्टर्ड बोल के उनके साथ चल के उनको हमने मेन की पॉइंट्स बताया कि ये पूरा जीएससी का जो भी हाउ दे फ्लोटेड इट, जो भी टेस्ट जो करना है उन्होंने डिजाइन किया है. They only design their own tests, and they only so they skip various tests which they have to do and other things. And also we discussed about the yields part, which I think already has been discussed. Like there are already a lot of hybrids which are there, which also are giving the same yield. From a consumer point of view, also we discussed on how it is very important. And also we talked about the hypocrisy of the government, about they push the organic farming, एक तरफ से push कर रहे हैं और दूसरे तरफ से they will say GM को भी they're pushing. How is that possible? So we try to, and Rahul Gandhi quickly said that, so they're doing it for the companies, so the chemical companies would only, and the seed companies and the chemical companies are both connected, is what he actually gave a statement in 2 or 3 minutes. That is what he said. Later on, he asked us also to meet Jairam Ramesh ji.
who was the environment minister during the BT Brinjal time. So then we also met him, and we had a discussion with him around 20 to 25 minutes. We spoke with him. Of course, he was really grilling us and cornering us. Bolke, what background? What background do you have? How can I trust you? How can I trust you more than Deepak Mantal? Is a patriot, and various other things. He was kind of saying, just to grill us is what we could understand, and trying to. So we really, I understand we stood his test of the issue. He went to extent of saying he was trying to also discuss about BT cotton. There is a choice. There should be a choice to customer. There will be a choice with GM mustard के साथ भी choice रहेगा. वो होगा अलग-अलग अदर भी होंगे. हमने एग्जांपल दिया कि बीटी कॉटन में अभी 99% बीटी कॉटन there is only BT cotton seeds available. Even a farmer wants to actually say भाई हमको BT cotton नहीं चाहिए, normal cotton चाहिए, there is no choice. And same would be the case with GM mustard is what we हमने बोला उसको. Of course, he talked about, so what do you want? He was saying about, then he was talking about Sri Lankan crisis and various other things. So he was also pushing us about what technical papers do you have and support do you have for backing all this. is उन्होंने बोला कि आपके पास क्या technical जो कुछ है. हमने बोला हाँ बहुत सारे researchers ने और scientists ने इसको back किया है, and we said we'll forward him, and I've shared with him our what all as Asha we have gathered around 7 to 8 people have written technical representations and here I think so that also should be shared with this group also. We will try to do that. So ये सब हमने उनसे बहुत सारा चर्चा करके we have been trying to I'm sharing here because ये सब question हमको भी आएंगे when we meet political representatives, and it's important we argue this out with them, and we should stand this test. Of course, we don't have a technical background, but जो general from a farmer perspective, a learned farmer perspective से हम discussion तो करना चाहिए उनसे. That is what we should keep doing, is what I understand. One positive out of all this was the Congress actually tweeted from its Twitter, which is also I think you can see. So right, they did say it's anti-farmer policy in this. So we felt that was one positive which came out, and there's a video also which is there where we talk about this issue and all. So Samyukta Farmer, she's a volunteer, and she did speak very strongly on this issue. So I felt that was a good big positive out of this, where if in Rajasthan also we want to put pressure by देखो Congress के channel से भी tweet किया है, the party has taken a stand, why are you not really, right? So I think so in that way, like when we were talking to Congress, we were saying that by Bengal ने stand लिया है. So TMC has actually taken a stand, why can't you? So I feel in that way we have to keep nudging and giving them evidence that okay fine, BJP is anyway anti-farmer, but other parties are taking stand. Like even the Tamil Nadu government has taken a stand last time, and they will continue to take that. So we could also use that as evidence. So I say we should keep trying and pushing local politically is what I feel. And the Bharat Jodo Yatra in itself is actually traveling across many states from Maharashtra to other places. I would still think we should put pressure on that Yatra in itself, because they work with a coalition of other parties locally also. That would also be good. Otherwise, also you should push locally your political parties. Quickly, the other few issues I would want to raise is about the bigger argument. The government yesterday also yesterday night the government came out with a a poster saying GM mustard, why is it positive and other things. And the key argument वो बोलते रहते हैं कि oil imports के बारे में. They keep saying about oil import. इससे हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं. We are doing a lot of oil import. GM mustard का yield increase करके हम ये करेंगे. So इसमें फैक्ट ये है कि
जैसे हम तेलंगाना में है, यहाँ पे ग्राउंड नट, सैफफ्लावर ऑयल, ये सब बहुत सारे साल से इसको कम करता जा रहा है. The area has decreased drastically. I know few areas in districts where I work, they are not even able to get seed also. बोल तो प्राइवेट मार्केट में भी उनको लोकल सीड वेराइटी नहीं मिल रहा ग्राउंड नट के लिए. That is the situation, right? So you are not encouraging local seeds. They are really pushing palm oil in big way. That is a big disaster in itself. We know how palm oil is causing a lot of issues. In Telangana, they're given target of 50,000. Imagine a dry state of Telangana where it is, they're given target of 50,000. They're able to achieve around 10,000 as of now, 10,000 acres. They're given target 50,000 acres, right? Because they want to establish big production or processing centers, and they need a lot of big area. So if you see, so there, one is pushing palm oil. So because of import of palm oil, they're saying we'll have locally palm oil. Because of they're saying mustard, they're saying that we need to increase the yield of mustard. Without even if there is more demand of mustard oil, also we are not sure. हमको मालूम नहीं कि इसमें ज्यादा डिमांड है कि नहीं मस्टर्ड ऑयल को, बट उसको दे आर ट्राइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ ट्विस्ट एंड आल्सो पुश इट. सो आइडियली जो हम लोकली कंज्यूम करते हैं वो ऑयल को दे आर नॉट रियली पुशिंग. लाइक अभी तेलंगाना में ग्राउंडनट, safflower, these are the sunflower oils, these are the oils which we consume locally. उसमें very high evidence of historically also cultivating locally is available. But they're not trying to push that. They're pushing palm oil, they're pushing this GM mustard in areas, this thing. So you can understand it is more about processing industry, right? Capturing the market and giving it to processing industry, or connecting it to all the chemical industries with the herbicides, which Nachiket and Dilip are also saying. So it is more about connecting the industry sector, but not about actually locally जो हम about local resilient crops जो है, not about that, right? What farmers can actually have knowledge, that is not something they are trying to push. So a few one other key issue I would want to also Harsha, we have to wrap up in 1 or 2 minutes. Sure. One other key issue I would want to share about glufosinate is about BT cotton. So BT cotton they have allowed glufosinate ammonium already, as Dilip was saying. I recently tried to do a survey in Adilabad district in Telangana. This time the farmers have sprayed around 4 sprays of herbicide. This time the cost of cultivation per acre is 36,000, out of which 6,000 has gone for herbicide. Right, and total pesticide and herbicide cost of cultivation is around 15,000 per acre, and 6,000 is gone for herbicide in itself, and there are 6 sprays of what do you call other chemicals. So yeah, so my point is I'll quickly show you a screenshot also of this. This is not really right. Okay, fine. I can't minimize this. Anyway, so yeah. So if you can see the screen here, the cost of cultivation. This is seed power, which is actually the seed power. So if you can see, total cost of cultivation, total herbicide is around 6,000 rupees, and total this thing is pesticide is around, if you combine, 15,000 rupees, and total cost of cultivation comes around 28,000, and with labor and other costs it comes to around 36,000. I'll share this link in the group. You can also check on this later on. So the point I want to raise is the farmers are indiscriminately would use herbicides if given a go.
They have given clearance for, so I'm just giving you, and our field team says that majority of farmers have used this herbicide combination this time. So this choice wala business, only some farmers will do, some farmers will not do. And in fact, in GM mustard wala case, they're saying this is only resistant for seed production. Seed production ke liye hi glufosinate, they're raising this claim. They're not even saying in general it is hybrid herbicide tolerant, right? Only during the seed production phase, I think so others can correct me. They're not even saying it is HT crop in officially when they're talking about it, right? But so this is a big issue. This crop is herbicide tolerant, and farmers will indiscriminately use it. A big challenge I feel as civil society, as farmer support collective groups is, again, we also need to face reality. हमको भी face करना है. Labor issue है. There is issues with labor. There are issues with climate change where farmers are not able to go and de-weed during heavy rains, and the weeds actually increase a lot of height, right? And it is very extremely gets difficult. So we also need to figure out हम कैसे support करते farmers को, because when we talk about this, they would raise this issue about, farmers want this technology, they are not able to get labor and various other things. So हमको ये भी address करना है from a farmer's point of view, and also support, of course, when they talk about this, the environmental concerns and everything are taken for a toss and they don't even care, right? So I feel ये मुद्दे पे भी हमको मिलके काम करना है, and definitely ऐसे सिग्नल दे दिया तो farmers use करेंगे ही, इसीलिए मैं cotton का example आपको दे रहा था. So this is another key issue, and another bigger issue is about last point is the cotton, which is as I think I already said it, the 99.9% जो भी cotton है वो BT का ही है. So GM mustard का भी where it is center of origin for us, that would mustard is center of origin for us. So that would also be gone for a toss, and it will be taken over by GM mustard, as how BT cotton has taken over the local varieties. So I should. Harsha, I have to stop you. Thank you. We have to stop because we are way over time. Thank you so much. You made some really important points, and especially around the real experience of farmers, how they are experiencing it, and the issue of excessive use of pesticide, which is going to happen. So that is again a very big concern. Thank you for that, Harsha. We'll come back to some discussions later. Now I would like to invite Devrat ji. Devrat ji is from, he's the president of the Confederation of Apiculture Industry in Uttar Pradesh, and he is directly involved with the issue of bees and honey production. So let Devrat ji, आप अपनी बात रखिए और मैं ट्रांसलेट करूंगी ये बात अंत में. हाँ जी, मैं लगभग 31 ईयर से बी कीपिंग से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने मधुमक्खी पालन से अपना कैरियर स्टार्ट किया था, और हमारा खेती में किसान परिवार से ही हूँ. मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो मधुमक्खी डिपेंड करती है वो केवल 2 ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड कर रही थी. एक थी सूरजमुखी, जो पूरी तरीके से खत्म होगी संकर बीज से ही, उसमें भी जीएम सीड्स आए ही नहीं थे, और अभी उसकी जो देसी बीज होते थे उसमें जो फ्लावर साइज था लगभग वो 9 इंच से लेके और 12 इंच तक का फ्लावर साइज होता था. आज उसका जो संकर बीज है, हाइब्रिड सीड्स है, उनका जो लगभग 3 इंच 4 इंच का फ्लावर साइज होता है, छोटा होता है, और उससे नहीं निकलता कुछ भी. और हम पूरा डिपेंड करते हैं ऑयल इंपोर्ट पे, यूक्रेन और रशिया की सनफ्लावर के ऊपर. तो हमारा जब सनफ्लावर ही बंद हो गया तो सनफ्लावर हनी हमारा आना बंद हो गया. हम जो सरसों की जो क्रॉप लेते हैं, 3 या 4 क्रॉप लेते हैं. अर्ली क्रॉप लेते हैं जिसको लाही बोलते हैं, फिर कुछ एरिया में उसको लाटा बोलते हैं, फिर उसके बाद की जो अगली क्रॉप होती है उसको लाहा बोलते हैं. मैं ये बदायूं और अलीगढ़, मथुरा, आगरा, भरतपुर, राजस्थान, ये इस पूरी कोटा
ये पूरी राजस्थान की बेल्ट है, उदयपुर, उसके बाद आपके कुछ एरिया में गुजरात तक जाती है और इधर हरियाणा पूरा और पंजाब और यूपी की जितनी भी बेल्ट है। तो इन सभी बेल्ट में जो हमारी जो सरसों की क्रॉप हो रही है, जो देसी क्रॉप है, मैं अपना सीधा सीधा व्यवसायिक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारे बीकीपर्स करते हैं वो लगभग 30 to 40 kg हनी मस्टर्ड में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं पर बी कॉलोनी। लेकिन जब से हमारे सीड्स चेंज होने शुरू हुए तो उनकी जो पहले हमने 50 kg तक भी लिया है, लेकिन जैसे जैसे हाइब्रिड सीड्स आने लगे तो हमारे हनी का जो प्रोडक्शन है वो घटने लगा और आज उसका जो एवरेज है वो 20 से 30 किलो के ऊपर आ गया है, जो पिछले सालों में रहा है। लेकिन जैसे ही ये अभी जीएम सरसों आ रही है, जो अभी हमारे मेरे से जो पहले जो वक्ता थे उन्होंने बताया, जो पेस्टिसाइड्स बता रहे थे, जो ग्लूफोसोनेट, उस पेस्टिसाइड्स की अभी हमारे हनी में भी डिमांड शुरू होगी अमेरिका की तरफ से कि आप इसको टेस्ट करा के दीजिए। यानी वो लगभग एक लोट का, एक नमूने का शहद के टेस्टिंग का खर्चा 20,000 रुपए उसका बनता है। तो उसको भी एक डिमांड आ गई और एक डिमांड ये आ गई कि आप जीएम का भी, जीएमओ का भी, नॉन जीएमओ हनी का हमें टेस्ट रिपोर्ट दीजिए कि आपका हनी नॉन जीएमओ है। पहले से थोड़ा चल रहा था, जब चूंकि 2016 में हमने भी एक जंतर मंतर पे आंदोलन किया था कि उस टाइम भी ऐसी समस्या थी। और अभी जैसे ये कॉमर्शियल व्यावसायिक उत्पादन करने की जो बात आई है जीएम को लेकर, तो अभी फिर दोबारा हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं, क्योंकि इंडियन हनी 95% मस्टर्ड हनी एक्सपोर्ट हो जाता है अमेरिका को, तो जो अमेरिका के इम्पोर्टर्स हैं हमारे हनी के, वो दोबारा फिर उन्होंने जीएम, चूंकि न्यूज यहाँ से पूरी चली गई है यूएस को, और वहाँ जीएम के ऊपर थोड़ा सा सतर्क होने लगे हैं और उनका कहना शुरू हो गया है कि हमें भाई इस वर्ष जो है जीएमओ सर्टिफाइड हनी चाहिए। आप उसका टेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने वो डालने लगेंगे। अभी शुरू नहीं किया, जो नए भी पीओ अभी आएंगे, परचेज ऑर्डर्स आएंगे हनी के, तो उसमें वो उसकी स्टार्ट कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे देश में लगभग 34 लाख बी कॉलोनी है। मैं नेशनल बी बोर्ड, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। एक 2015-16 में एक कमेटी बनी थी EAC टू PM, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। उसके अंडर में एक कमेटी बनी थी BDC, बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी, मैं उसका सदस्य भी हूँ। तो उस कमेटी के माध्यम से पूरे देश भर में हम गए, 8 लोगों की वो कमेटी थी और हमने मीटिंग करी और साइंटिस्ट से, किसानों से मुलाकात करी सभी जगह। तो एक रिपोर्ट बनाई कि हमारे देश का पॉलिनेशन अगर हम फ्लावर का करना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी है, फल है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स हैं या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं या जो भी क्रॉप्स है, तो हमारे देश को लगभग 200 मिलियन बी कॉलोनियों की जरूरत पड़ेगी, लगभग 20 करोड़ बी कॉलोनी की जरूरत पड़ेगी और लगभग 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे इसके माध्यम से। तो एक तरह से, और जो प्रधानमंत्री जी है उनकी एक योजना है स्वीट रेवोल्यूशन, मधु क्रांति। तो जो मधु क्रांति लाने का जो सपना, एक तरफ तो मधु क्रांति और नेचुरल खेती की तरफ उसकी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप लाने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये एक तरह से सरकार का डबल वो हो रहा है, चेहरा है, डबल बातें हैं, तो इनसे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो हम कई जगह मुलाकात भी करी है और कल हमने भरतपुर में, राजस्थान में जाके अपना एक बी कीपरों ने लगभग चल के उनके सरसों अनुसंधान केंद्र जो वहाँ है, हमने वहां तक अपना एक पैदल मार्च किया और उस मार्च के बाद हमने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को उनके माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान को इसमें हस्तक्षेप करने की बात करी कि आप इसकी जो है बुआई, इसको रुकवाइए और इसको पूरी तरीके से रोकिए। तो हमारे जो बीकीपर भाई है, सबसे पहले वो 2-3 सालों से कुछ ऐसी समस्याओं थी और दूसरी जिनकी वजह से रेट प्राइस हनी के उनको अच्छे नहीं मिल पा रहे थे और कुछ एडल्ट्रेशन का इशू था। लेकिन अब ये दूसरा इशू ये आ गया है, तो हमें पिछले साल अच्छे प्राइस हमें मिले थे हनी के और इस साल जैसे ही अभी जीएम की बात आने लगी तो हमारे जो हनी के प्राइस है उसकी कम की बात होने लगी है। तो जैसे ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हनी परचेज करने वाली हैं,
बड़े ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स भी, तो वो भी उनकी भी ध्यान रहता है कि कौन क्या मार्केट में सिनेरियो चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसी के हिसाब से वो अपने प्राइस को घटाते बढ़ाते रहते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो एक तो ये सबसे मेन इश्यू है। अगर मैं अब आता हूँ किसान की तरफ से अपनी बात करने के लिए, तो हम पहले जो देसी सरसों हम बुआई करते थे, तो हम अपने ही जो खेत की जो अच्छी पैदावार होती थी उसी में से ही हम बीज अलग करके रख लेते थे और उसको नेक्स्ट ईयर बो लेते थे। जो हाइब्रिड सीड्स आने लगे उसी में ये समस्या आने लगती है कि यदि हम उनको भी, संकर बीजों को भी दोबारा बुआई करते हैं तो उनके भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। और जब हमारी मधुमक्खी हाइब्रिड संकर बीज के बोई हुई सरसों के फ्लावर्स के ऊपर जाती है, तो उसके ऊपर भी उसको हनी ज्यादा नहीं मिल पाता, अच्छा नहीं मिल पाता। और जितना हनी हमें अच्छा मिल पाता है वो देसी क्रॉप्स के ऊपर जो हमारी है सरसों की, उस पर मिल पाता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा बी कीपर है, मतलब सबसे पहले तो मधुमक्खी बहुत सेंसिटिव जीव है, और जब इसमें पेस्टिसाइड्स होगा तो वो मधुमक्खी उसके ऊपर जाएगी तो मधुमक्खी मर जाएगी, तो मधुमक्खी का उनका जो परिवार है वही नहीं बढ़ेगा और पोलिनेशन नहीं होगा। दूसरा, कितना एक मधुमक्खी पालक को बी कीपिंग करने से, मधुमक्खी पालने से बेनिफिट होता है, उसका 15 गुना ज्यादा बेनिफिट एक फार्मर का होता है जिसके यहाँ बी कॉलोनी लगाई जाती है ले जाके। तो पहले हमारे जो फार्मर्स थे, जहां हम माइग्रेट करते थे अपनी बी कॉलोनीज को, उनके साथ लड़ाई झगड़ा होता था और वो चीजें बताते थे कि अगर हमारे फूलों का रस ही चूस ले जाएगी तो फूलों में क्या रहेगा, उनको पता ही नहीं था। लेकिन जब हमने उनको समझाया, बताया और उनके यहाँ जाने लगे और उनकी पैदावार बढ़ी थ्रू पोलिनेशन, जब परपरागण की क्रिया होती है और वो फूलों पे जाती है, नरमादा फूल पे जाने के बाद उनका जो पोलिनेशन हुआ और अच्छी पैदावार हुई, तो अब वो खुशी खुशी बी कीपर्स को बुलाने लगे हैं और बी कीपर्स माइग्रेट करने लगे हैं। और सबकी लगभग साइट्स फिक्स हो गई है ज्यादातर की, क्योंकि वो बुलाते हैं आप मेरे यहाँ आना, मेरे यहाँ आना, तो उन सभी जगह पारिवारिक संबंध हो गए हैं लोगों के। तो अगर हमें पोलिनेशन सपोर्ट्स हमारी हट जाएगी क्रॉप्स के ऊपर से, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, 10 साल पहले एप्पल के बहुत छोटे छोटे आने लगे थे बाजार में, ठेलियों पे हरे हरे एप्पल बिकने लगे थे, अच्छे नहीं थे। रिसर्च हुई, पता लगा कि यहाँ बी कॉलोनी लगाने की जरूरत है, पोलिनेशन करने की जरूरत है, ताकि पोलिनेशन होगा, परपरागण होगा, तो फूल की निषेचन की क्रिया पूरी होगी और उससे फल ज्यादा लगेंगे और वो फल अच्छे भी लगेंगे। तो क्योंकि पोलिनेशन 2-3 तरह से होता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीटों के द्वारा, और कीट उत्तम कीट माना जाता है मधुमक्खी को। तो इस तरह से हमारा वो परपरागण की पूरी क्रिया हो जाती है। तो हमारे जो बी कीपर्स हैं उनकी बी कॉलोनी को, कुछ जो हमारे नॉर्थ रीजन के स्टेट्स हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है और जम्मू कश्मीर है, वहां वो अपनी हमारी बी कॉलोनियों को ले जाते हैं और उनमें लगाते हैं। 1 महीने के लिए पोलिनेशन के लिए 1500 रुपीज पे करते हैं बी कीपर्स, ताकि उनका पोलिनेशन हो जाए, क्योंकि हमें एप्पल से कुछ हनी नहीं मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें हनी नहीं है, केवल पोलिनेशन की जरूरत है। ऐसी हमारी दालों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी, आपको मैं बताऊं 3-4 साल क्या, जब 13-14 की बात थी, दालों में बहुत भारी संकट आ गया था और हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो हमने भारत सरकार को सुझाव दिया कि चूंकि दालों से हमें नेक्टर नहीं आ रहा है, तो बी कीपर अपनी कॉलोनी को माइग्रेट नहीं करेगा उनमें। जब बी कीपर उनमें कॉलोनी को माइग्रेट नहीं करेगा तो पोलिनेशन नहीं होगा। अगर आप दालों में कुछ कॉलोनियों को लगवाने लगे, बी कॉलोनी को लगाने लगे, तो आपका पोलिनेशन हो जाएगा और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी और हम आयातक की जगह निर्यातक हो जाएंगे। हमें दालों को इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और हम एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और सरकार ने इन सुझाव को कुछ समझा और वहां बी कॉलोनीज को उनके यहाँ लगाने लगे, और आज हम सब देख रहे हैं कि हम दाल में आयातक की जगह निर्यातक हो गए। तो अगर हम पूरे देश की पूरी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स का पोलिनेशन करना चाहते हैं, एक तरफ हमारा देसी नेचुरल खेती की तरफ झुकाव है और उधर बढ़ने की बात है, और एक तरफ दूसरी तरफ हम जीएमओ क्रॉप ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं। मैं इतना बड़ा इसमें साइंटिस्ट या वैज्ञानिक तो नहीं हूँ, मेरे से पहले हमारे कई वक्ता रहे हैं, उन्होंने काफी गहराई से इसको समझाया है, इसके साइड इफेक्ट को बताया है कि पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर से नहीं निकलेगा, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। तो हमें इसका जैसे भी हो पूरा विरोध करना चाहिए, और हम जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा
हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज आप सबके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका जहां भी हमारी जरूरत पड़ती है, बी कीपर्स आपके साथ है। और अगर कहीं विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती है, कहीं लिखा पढ़ने की बात करती है, तो हम उसमें आप लोगों के साथ हैं। काफी समय हो गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच देवव्रत जी। मैं अभी अनुवाद करती हूँ इंग्लिश में। सो फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली द मेन पॉइंट्स दैट देवव्रत जी मेड was one was that they rely mustard is one of their main crops that they rely on for honey production. And recently what they've noticed is with the hybrids, their yield is going down, and with the natural mustard, the non-hybrid, the yield is much higher. It used to be up to 50 kilos they used to get. Now it's gone down to up to 30 kilos. And then the other issue they are facing is that their mustard honey, most of it is exported, but now the export markets are demanding certificates, particularly on glufosinate, and also now for GMO. So they want non-GMO honey, and so it's going to impact their market also significantly. And also the national companies are also demanding such tests. The other thing they're saying is that the government is very contradictory. On the one side, they are promoting Sweet Revolution, which is a program by the PM. It's kind of like a white revolution, green revolution to increase honey production. But what they are doing is they are doing contradictory things like promoting GM, which is going to impact the honey. So how is that going to work? And the other major point he said is how they have been organizing in Rajasthan, in Bharatpur. They've done a very big march of all the beekeepers, and they have been organizing the beekeepers because they are greatly opposed to GM mustard. And they have been writing letters, etc. And so they are also interested to join this national campaign against GMOs, and they have also expressed their support. And I think one other point he made is that bees are very important, of course, for pollination, and the future of Indian agriculture depends on bees, and the threat to bees from the chemicals and glufosinate is very high. So it's also a very big threat to our agriculture as a whole. So because pollination will be reduced if the bee populations go down. So our populations are quite low, and they need to go up to 20 crore colonies, he said, if we want to have proper pollination. So this is another very big issue. So as we can see that the bees and the are very strongly connected to our food and farming, and the impact of GM mustard on them is going to be quite bad. So with that, I'll stop the translation. Thank you, Devratji. And our final speaker, I would like to call Geeta from Maharashtra. Are you there, Geeta? So I think from you, it would be great to hear about the experience of Maharashtra, because BT cotton was, as you know, Maharashtra was in the spotlight. And what happened there? Was it a success? What impacts were there? What happened with the chemical usage? And of course, the debt and the farm suicides. Anything you'd like to add as to why we should be opposing GM mustard from your experience and experience of Maharashtra? And Geeta, I would also request you to do a quick translation, as you can do both Hindi and English. So over to you, Geeta. Yeah, hi. So I actually wanted to start with that only. BT cotton, the way BT cotton was introduced in India was through illegal tests. Those tests were actually done in Gujarat, and then they were brought to Maharashtra. And we all know it was introduced in 2002, I suppose. And from that year, we really know, how ये जो farmers suicide हो रहे थे, और उसका जो rate बढ़ते गया. एक मिनट, मेरी बेटी आई है यहाँ पर. I'll just send her to my mother. Just 1 minute. In the meantime, आप सब अपने questions please लिख के रखिए, ताकि हम end में सबको बुलाएंगे. Yes, Geeta, please come. हाँ, तो हमें आज तक के रिपोर्ट से ये पता ही है कि न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स इस पर आए हैं कि बीटी कॉटन ने फार्मर्स को कैसे अफेक्ट किया और कितने फार्मर्स की जान ले ली है. बहुत हमारा यंग फार्मर्स
का चंक ड्रॉप हुआ है उस फार्म की वजह से, उस क्रॉप की वजह से। और हमें ये भी पता है कि बहुत लोगों ने मेंशन भी किया है स्टैटिस्टिक्स की, मोर देन 90% अभी बीटी कॉटन है। अगर किसी को इंडिजिनियस कॉटन सीड भी चाहिए तो वो बहुत मुश्किल है मार्केट से लाना। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था बिफोर बीटी कॉटन, सपोज इफ इट वाज 100 rupees, now because of bt cotton it has increased to 1000 rupees and the rates have not increased though much। उसके रेट्स इतने नहीं बढ़े हैं कि जिसका उत्पादन करने के बाद अब अगर आपको बेचोगे मार्केट में तो उतना पैसा आपको रिकवर नहीं होगा। सो ओवरऑल इकोनॉमी वाइज भी अगर देखेंगे तो फार्मर खुद इकोनॉमिकली लॉस में है, जिससे ओवरऑल हमारा जीडीपी भी लॉस में जाता है। और ऊपर से वी आर लूजिंग ऑन फार्मर्स ऑल्सो, फार्मर्स लाइफ ऑल्सो। सो बीटी कॉटन स्टोरी इज completely failure. It has caused many issues, social, economic and even psychological traumas for many farmers। बहुत सारी families disturb हुई है। अगर इसको इस तरीके से भी देखा जाए, इस एंगल से भी अगर आप रिसर्च करते हो, जैसे मैंने रिसर्च किया था, आई हैड वर्कड विद विडो फार्मर्स, और वो विडो फार्मर्स की अगर आप स्टोरी सुनोगे तो it cannot make you sleep well, for many nights। तो बीटी कॉटन स्टोरी इज अ कंप्लीट फेलियर। अब आते हैं जीएम मस्टर्ड। सो इंडिया इज एक्चुअली नोन एज नॉन जीएम फूड क्रॉप कंट्री। मतलब हमें ये टैग है यूरोपियन कंट्रीज में, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, तो वहां पर क्या है कि हमें नॉन जीएम टैग होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा देखा जाता है, फूड क्रॉप्स को। आप ये देखो कि ये जीएम क्रॉप यूरोपियन कंट्रीज में क्यों बैन है, एंड व्हाई इट इज देयर ओनली इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। सो अगर आप उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एक मिनट, जैसे कि अभी ये जिन्होंने ट्रायल अप्रूव किया है उसके जो हेड है मिस्टर, आई थिंक ही इज दीपक पेंटल, ऐसा कुछ नाम है उनका, हाँ दीपक पेंटल। वो ये कहते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला है, और ये बहुत सेफ है क्योंकि ये बहुत सारे हनी ग्रोइंग कंट्रीज में भी उगाया जाता है। उन्होंने खुद ने इसको डीरेगुलेट किया है। सो वी आर कंपेयरिंग विद whom? Why it is not there in European countries? Why it is banned in European countries? और दूसरी बात ये है कि ये जब आप जीएम क्रॉप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, फर्स्ट फूड क्रॉप है ये, बाकी के तो ये हमारे कैश क्रॉप थे, टी बोलो या बीटी कॉटन बोलो, बट नाउ जीएम क्रॉप को, और वो भी मस्टर्ड को, हमें इतना लाइटली नहीं ले सकते बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर इंडिया। इट इज नॉट दैट इट इज यूज्ड ओनली इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे किसी ने मेंशन किया है कि कुकिंग में ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट बोलकर ही यूज किया जाता है। और इस सत्याग्रह को जो सरसों सत्याग्रह बोल रहे हैं, इसको कैंपेन को हम सॉल्ट सत्याग्रह के जैसे ही एक्चुअली लोगों ने रोड पर आने की जरूरत है कि वी हैव टू रियली अपोजिट उसके एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। तो सिर्फ हनी बी को लेकर ही नहीं, तो वो सॉइल को डीजनरेट कर रहा है। हनी बीज तो खत्म हो जाएंगे, हनी बीज से सिर्फ हनी प्रोडक्शन ही नहीं तो दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन भी अफेक्ट होगा। इट इज नॉट जस्ट दैट ओनली दैट इकोनॉमी से रिलेटेड ही नहीं, हमारा इकोसिस्टम भी अफेक्ट होने वाला है। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो जरूरी है उस सॉइल के प्रोडक्टिविटी, फर्टाइल और ये सब चीजों को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं फार्मर्स, उससे सॉइल प्रोडक्टिविटी भी घट रही है। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स जो नेसेसरी होते हैं सॉइल का रेजुविनेशन के लिए, फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, वो भी नुकसान हो रहा है। सो इकोनॉमी वाइज देखे जाए तो हम बहुत इस डेंजर को इनवाइट कर रहे हैं कि जब सारी यूरोपियन कंट्रीज हमको बोलेगी कि वी डोंट वांट क्रॉप्स एक्सपोर्ट फ्रॉम, वी कैनॉट इम्पोर्ट फूड फ्रॉम इंडिया। हम वीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखो कि जो क्रॉस पॉलिनेशन से सरसों के खेत के बाजू में अगर गेहूं का खेत है तो वो गेहूं का खेत भी अफेक्ट होने वाला है, राइस का खेत है तो वो भी अफेक्ट होने वाला है, अगर कोई दूसरा खेत है वो भी अफेक्ट होने वाला है। सो ऑल दीज कंट्रीज विल बैन इंडियन प्रोडक्ट्स। सो ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट भी अफेक्ट होगा इससे। ये हुआ एक ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें। अभी हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत लोगों ने बोला ही है कि एलर्जिक है, उसमें ग्लाइफोसेट जो यूज होता है दैट इज ऑल्सो
cancerous actually. Though there are many people who would say cancer तो बहुत अन्य कारणों से होता है, but there are few journals, Lancet जैसे है और बहुत सारे journals है जहां पर ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जीएम क्रॉप्स और जीएम में जो चीज होती है उससे कैंसरस डिसीजेस होती है, एलर्जिक डिसीजेस होती है। दूसरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीज है वो तो मतलब नॉन क्यूरेबल है, उसके ऊपर तो उपचार ही नहीं है। तो ये हम बहुत बड़े हेल्थ हजार्ड को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसी ये बात होगी। सो ये ऐसा नहीं है कि बस इसको विरोध करना है, इसको अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो हमारी आगे की जनरेशन को कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कैसे अफेक्ट होंगे, वी डोंट हैव दोज आंसर्स। मतलब क्या हो सकता है ये बहुत कम शब्दों में अभी आ रहा है। जैसे कोरोना क्या था किसी को पता नहीं था भी या नहीं था ये अब तक लोग बोल रहे हैं, बट उसके इम्पैक्ट्स हम आज भी देख रहे हैं। जिस प्रमाण से स्टेरॉइड का यूज हुआ और उसके इफेक्ट्स अब देख रहे हो, कोरोना से क्योर होने के बाद भी आपको बहुत अलग अलग इलनेस है, वैसे ही इम्पैक्ट इसके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसे लगते हैं इसमें सोचना चाहिए जो है, जो कंपनी ये टेस्ट के लिए अप्रूवल मिला है, जिस कंपनी का, उस कंपनी का नाम है बेयर कंपनी, है ना। और इसके में टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती हूँ कि कौन से जीन्स का यूज करके ये DMH11 मस्टर्ड सीड इंट्रोड्यूस होने वाला है। वो तो बार्नेस और ब्रासर जीन है, उससे ये सीड बन रहा है और वो प्रोडक्टिविटी रेज करने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी रेज करके हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हमारा कितने मिलियन डिमांड है, 2.8 मिलियन डिमांड है और 2.4 या 2.6 हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब है हमारे पास प्रोडक्शन है। तो अगर देखा जाए तो इतने कम चीज के लिए हम ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ऑल दोज जो स्टेटमेंट्स वो कर रहे हैं कि हमें रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो वहां से हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते और प्राइसेस बढ़ेंगे, वो सिक्योर करने के लिए हमें ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मोरेटोरियम को हटाकर हम इसको ट्रायल करेंगे, ये जो सब बोल रहे हैं, दीज ऑल आर fake things and those all are false things because one thing कि इससे प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी, क्या रेट है, उसका तो टेस्ट हुआ नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है, तो इमीडिएटली आप क्यों ट्रायल कर रहे हो। तीसरी बात, जो कंपनी ये ला रही है वो कंपनी के ऊपर और उसकी सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर यूएस में ही मोर देन आई थिंक सो टू 1.40 lakhs या मोर देन उससे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड है कि वो कैंसर विक्टिम्स जो है वो लोगों ने इस कंपनी के ऊपर केसेस रजिस्टर किए हैं। तो दिस हैज हैपेंड इन यूएस इटसेल्फ। तो ये कंपनीज जो है वो हमारे फार्मर्स को और जहां जहां पर ये इंट्रोड्यूस होगा इनको एक्चुअली स्लेव्स बनाना चाहते हैं। आप सभी को पहले के स्पीकर्स ने तो बताया है ही कि अगर हम जीएम मस्टर्ड क्रॉप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे खुद के जीएम सीड्स नहीं रहेंगे, हम रखना भी चाहेंगे तो भी वो पल्यूट हो जाएगा, हम इसको धोकर साफ नहीं कर सकते क्योंकि वो जिस तरीके से पेनिट्रेट करता है सॉइल को, उसके रूट्स को, उसके आजू बाजू के जगह को, हमारे हेल्थ को, सिर्फ हमें नहीं तो होने वाले बच्चे को, जनरेशंस पर कैसे अफेक्ट करेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब है कि उसको इनवाइट करने का सिर्फ ये कारण नहीं हो सकता अच्छा कि इकोनॉमी हमारी अच्छी हो जाएगी, फार्मर्स को पैसे मिलेगा। फार्मर्स ऐसे ही सप्रेस्ड है, जिसको पैसा मिलेगा वो कंपनी है और ये कंपनी के दलाल लोग हैं, उनको पैसा मिलेगा। जो ये कंपनी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडिया में वो उनका झमेला है। हमारे फार्मर्स तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, और नहीं सिर्फ वो नहीं, हर किचन अफेक्ट होगा। India का each and every kitchen is going to be affected with this seed. Who's going to have check on what? पहले हमारे food system in India and the food distribution system in India is not really monitored. उसके ऊपर ठीक से चेक नहीं रखा जाता है। मार्केट में जो चीज आ रही है वो सच में ISI रजिस्टर्ड है, वो सच में FSAI रजिस्टर्ड है, वो सच में एक अच्छे जगह से आई है नहीं आई है। ये सारी चीजों को मुद्देनजर रखते हुए
हम ये जो सरसों सत्याग्रह है, इसमें विमेन को, चिल्ड्रन को, फार्मर्स को, मतलब बिजनेस कोई भी हो, सबको खाना खाना है। और बिना तड़के का कोई खाना नहीं खाता है इंडिया में, है ना। वी आर नॉट लाइक यूरोपियन कंट्रीज वेयर वी ईट ओनली बॉइल्ड फूड, हमें तड़का लगता ही लगता है। सो मेरा ऐसा कहना है कि सिर्फ ये जो एनवायरमेंटलिस्ट या फार्मर्स रिलेटेड लोग नहीं, तो हर कोई स्ट्रीट पर आना चाहिए, इस मुद्दे पर बोलना चाहिए कि जब तक आप इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में नहीं बोलते, इसका ट्रायल भी नहीं करना चाहिए। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रायल, एंड देन द वे बीटी कॉटन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, गुजरात में इलीगल ट्रायल्स हुए और फिर वहां से वो महाराष्ट्र में आया। ऑलरेडी अप्रूव होने के पहले ही बीटी कॉटन वाज ग्रोन इन महाराष्ट्र। ये स्टोरीज है विदर्भा में। बहुत सारे फार्मर्स को अगर आप पूछोगे और उनको पूछोगे कब से आप उगा रहे हो, तो दे विल डेफिनेटली मेंशन बिफोर 2000, एंड ऑफिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। तो अभी भी जिस फोर्स से वो आना चाहता है, एक बार जीएम फूड में ये इंट्रोड्यूस हुआ, देन वी कैन नॉट रियली स्टॉप अदर फूड क्रॉप्स की जिसमें वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको पॉलिटिकली भी देखना चाहिए, इकोनॉमिकली भी देखना चाहिए। और हम भले फार्मर हो ना हो, हम रिसर्चर हो या जो भी हो, हम जो भी हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, हम सबको रोज खाना खाना है, और वो खाना हमें सेफ खाना है। पहले हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की लड़ाई में बहुत पीछे है कि कन्विंस करने में कि अगर हम ऑर्गेनिक में शिफ्ट नहीं होते हैं तो हमारे हेल्थ को क्या प्रॉब्लम्स होगा। और देयर आर स्टिल पीपल हु से दैट आज भी मरना है, कल भी मरना है, तो थोड़ा पैसे कमा कर मरते हैं। बट दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम, जिसको हम सॉल्व या उसको ठीक नहीं कर सकते। दिस विल बी एन इररिपेरेबल डैमेज which cannot be damaged by medicine। ये कंपनीज का वही नाटक होता है, पहले वो बीमारी लाएंगे, फिर मेडिसिन लाएंगे, फिर हमें परमानेंटली बीमार करेंगे, फिर फार्मर्स को स्लेव कर देंगे। वो हमें उनके डिमांड से हमें जो प्राइस बोल रहे हैं ना, आज हम अगर जीएम मस्टर्ड सीड हमें किसी से भी फार्मर में खरीदनी है तो मुझे 220 में मिलेगी, उसका प्राइस उतना रहेगा। केजी में अगर मैं खरीदती हूँ उससे भी कम प्राइस में मिलेगा अगर आप लोकल एरियाज में जाओगे तो। बट व्हेन दिस जीएम मस्टर्ड विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो इंट्रोड्यूस होगा 400 रुपए में। क्यों 400 रुपए में इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि वो बोलेंगे आपको फायदा है, वो 100 रुपए में नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे। जब वो 400 में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसका प्राइस इतना बढ़ेगा, जब 90% एरिया उसका कवर होगा, दे विल डेफिनेटली मेक इट मोर देन 4000, एंड देन इट विल बी वो कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। हमारे फार्मर्स पहले ही स्मॉल फार्मर्स है, मतलब large farmers, large scale farmers, mid scale farmers and small scale farmers। तो small scale farmers हमारे 60 to 70% है। तो again who would be affected? Those farmers जिनके पास पहले ही जमीन कम है, जो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो वो फार्मर्स है जो पहले इस सीड के पास जाएंगे। लार्ज स्केल फार्मर्स सोचेंगे थोड़ा बहुत कि हमारे पास और एक्सपेरिमेंट है, बट छोटे फार्मर्स को जल्दी पैसा चाहिए, तो वो सोचेंगे कि अगर मेरा इससे क्रॉप से प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, मार्केट से मुझे प्राइस मिल रहा है, तो मैं ये खरीद लूंगा, एंड ही विल डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट। एंड वंस अ स्मॉल फार्मर स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, वो जो बोलते हैं ना कि ऐसे फास्ट स्प्रेड होगा कि वी कैन नॉट रियली कंट्रोल इट। तो मेरे मुद्दे गीता तो जी थोड़ा रैप अप हाँ, वही मेरा तो मुझे जो बोलना था वो बहुत से लोगों ने बोल दिया ही है। मेरा सिर्फ ये कहना रहेगा कि जो चीज दिखाकर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसे चेक करो, इस बारे में बोलो व्हाई यूरोपियन कंट्रीज इज अपोजिंग, इसके बारे में सवाल करो। ये जो बेयर नाम की कंपनी है, वो अगर उसके पेटेंट राइट से इंडिया को एक्सप्लॉइट करेगी तो आप क्या करोगे? क्योंकि अभी तक इंडिया के फूड क्रॉप्स के ऊपर पेटेंट राइट्स, जैसे मॉन्सेंटो जैसे कंपनीज है, ये अलग कंपनी है, उनके जो बीटी कॉटन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, नाउ वी डोंट हैव पेटेंट राइट्स ओवर दिस। नागपुर में एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने बीटी कॉटन खुद का इंट्रोड्यूस किया है, बट फिर भी मार्केट में बाहर के कंपनीज की सीड्स है इन विच इज मोर देन 60%। सो हमारा पेटेंट राइट तो पूरा चला जाएगा।
तो पेटेंट राइट मतलब इंडिजीनियस सीड तो खत्म हो जाएंगे और खुद भी नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि ये कंपनी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है. सो वी शुड think of economy also, economic wise also it is harmful, environment also it is harmful. फिर ये पर्यावरण बोलो, हेल्थ बोलो, वो भी हार्मफुल है. हर घर का किचन, इंडिया के हर घर का किचन खराब होने वाला है. आप ये सोचकर इसका विरोध कर सकते हैं. इसके लिए हमें फार्मर होने की जरूरत नहीं है. और बस बाकी तो हेल्थ और बाकी सब चीजों के ऊपर बोला गया है एंड आई डोंट वांट टू रिपीट ऑन दैट. Thank you so much, Geeta, for that excellent and very passionate presentation that you made, and also thank you for both the languages for keeping it bilingual. And I think we have one more guest called Caxton from Tamil Nadu. I understand they are here. Would you be able to say one or two words for us, Caxton? Hi. Can you hear me? Yes, go ahead. I think most of the points have been already discussed, but I just want to add one little thing here about the GMOs. This is primarily profit driven, and profit driven not for the individuals, but for the corporations. ये corporations के लिए profit के लिए बनाया है, हमारा profit के लिए नहीं. First point. And the second thing is, because of this, to ensure that we go back to them for their seeds, they introduce a specific genome called a terminator gene. This was also patented. This is a patented genome, apparently, and that is introduced in our genetically modified crops, just so that it will curtail that crop's fertility. Now, when it comes to mustard, we are going to consume it, meaning we are taking the genetic information of a plant matter which has no fertility in it, which means that genetic imprint is going to be within us, and we are naturally going to be infertile. We can already see that happening with all of the crops that we have in our country, with the food, milk, with the with the chicken, the eggs. So this is just going to be one more thing. So yeah, I think that is just one thing that I wanted to add. But otherwise, I enjoyed the presentations and thank you. Thank you. तो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है कि ये एक जो सीड होता है वो स्टेराइल होता है, जो नर भांजता कहते हैं उसको. इसका मतलब कि नर भांजपन, इसका मतलब ये है कि वो बीज, उसका जो ट्रेट है वो दूसरे बीजों से मिक्स करेगा तो उसके वो इनफर्टाइल पैदा होंगे प्लांट्स, मतलब वो दूसरा अपना पैदावार नहीं दे पाएंगे. तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है जो फैलनी नहीं चाहिए. और तो ये उनका पॉइंट था. तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट पीपल फ्रॉम द ऑडियंस. अगर आपका कोई कमेंट है और आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अभी आप बोल सकते हैं. और लास्ट में सुहास ताई को हम बुलाएंगे एक स्लोगन के लिए, लेकिन अभी उनका एक क्वेश्चन भी है, तो प्लीज गो अहेड. सुहास ताई, प्लीज अनम्यूट yourself and you can ask your question. नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं, मुझे लगता है अभी ये टर्मिनेटर जीन का जो मुद्दा है, आई एम मोर वरीड अबाउट इट interacting in other plants rather than human beings, but that's a small thing, we can keep it aside for the moment. लेकिन मुझे स्लोगन की बहुत ये लगती थी कि अभी गीता जी ने और पहले शर्मा जी ने बहुत अच्छे इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस किए, और मतलब इसके लिए साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है. फिर भी यदि आप लोगों को और मदद के लिए मैं ऑफर करती हूँ कि मैंने कुछ एक्टिविस्ट, मेरा साइंस वाला बैकग्राउंड है, तो एक प्रेजेंटेशन एकदम सरल इसमें बनाया था, which if anybody likes I can share it. हिंदी Thank you for that offer. ये सुनने में मुझे याद आ रही थी
कि हमने 2018 में शायद सरसों के इस पे बहुत बड़ा सभी संगठनों ने मिलके जो ये किया था, प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में, तो मनीष जैन जो हमारे दोस्त थे उनके साथ बहुत बड़ा ग्रुप आया था राजस्थान से, और उनका स्लोगन था, वो मुझे लगता है कि वो हमें यहाँ जरूर देना चाहिए, और हर व्यक्ति जो जीएम के प्रोटेस्ट में जुड़ा है उन्होंने ये सब जगह पहुंचाना चाहिए। वो था, आज न मांगे काल न मांगे, जीएम सरसों कभी न मांगे। तो सब तैयार है तो सब अनम्यूट करके आखिरी Yeah, everybody please unmute and we are going to say the slogan together. अभी वेट करते हैं सुहासताई, एंड में क्लोजिंग के टाइम पे करेंगे, अभी थोड़ा एक दो लाइन सब बोलेंगे। दूसरे लोगों को, anybody who wants to make any comments including the speakers, but first we will give priority to the audience. Any questions in the chat or in Facebook Live, please announce them. Any speakers would like to make any comment, just like Suhastai did right now? And after that, I will invite the speakers to make one final line, concluding line. It can be your inspiring thought for the movement which is going to come now. It's going to be very busy. I'm sure December, this month and the next month are going to be very busy for all of us organizing. Anybody going once? Go ahead. मैं बोलती हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मैं देखो अभी आई एम अ न्यू मदर, लाइक मुझे बेटी है, अभी 2-2.5 साल की बेटी है। तो आई थिंक इवन इफ यू थिंक अबाउट वेरी स्मॉल थिंग, आप खुद की फैमिली के बारे में भी अगर सोचकर कुछ स्टेप रेस करोगे ना, दैट विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट द यूनिवर्स। ये इस तरीके का है, अगर आप खुद के राइट के लिए बात, दिस इज नॉट जस्ट द यूनिवर्स क्वेश्चन, दिस इज नॉट जस्ट इंडियाज क्वेश्चन, दिस इज योर फैमिली क्वेश्चन। ये तुम्हारे फैमिली में एंटर होने वाला है, हमारी आगे की जनरेशन को अफेक्ट करने वाला है। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू वांट टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, डॉटर्स, your relations, your friends and everything, come on road and talk about it, oppose it, and stand everywhere and speak from wherever you can. मुझे ये लगता है, I can share an article which will talk about, which will give details about statistics, factual things, scientific things, social and this thing, वो मैं share करूँगी अगर thank that you. is useful. I would like to ask I think we will share links, because many people want to share presentations and all. We will probably do that on Facebook, all these sharings. Thank you so much, Geeta. Anybody else, Sri Harsha, in one line, we want to wrap up because we are already over time. So Sri Harsha, any final words? Anybody else who's around? Dilip, any final words? Yeah, can I? Yes. Harsha is already there. You invited him first. No, you go. You can go first. Okay, if you so want. I think I would say the genetic modification of crop is not at all a sustainable solution, and we don't need GM mustard. We don't need any other crops is modified with GM technology. I think the only sector which is going to be sustainable with the genetic modification of crop is the agrochemical industry and seed industry, not the farmers. So I would recommend the scientists and government who are working for the betterment of farmers, if they wanted to do so, to make better pricing for farm produce, so that farmers themselves can come up with non-chemical alternatives, and they can avoid all these dangerous technologies. They can make good crops because farmers have the knowledge, they have the seeds. So I think that's what they wanted to do, not to adopt GM technology anymore. Thank you so much. Perfect. Thank you for that thought. Harsha? I think so. We need to. So this is a very key battle. Because not only mustard, GM maize has been being pushed. There are other food crops which are waiting in line, which the government wants to push, right? So
I believe, irrespective of, for example, if South India doesn't have mustard, there are other crops which would be pushed, and they would say, fine, we have, so even when we talk to farmers, and if you're not able to convince it this way, the other way is, we have to make sure there are crops already given field trials and all, like GM maize, which have been approved. So I feel, given all this context, this is a huge battle which we have already half won, and we have in 2016 we had got this thing. And even the Supreme Court, there is a case going on. There's strong evidence on the side of civil society. So we need to really push and make sure, we don't allow this into our food, into our soil. Thanks for that. Thanks for that, Harsha. I think we are kind of done with our speakers. So on that note, I just want to say that Sarson Satyagrah is the name of the campaign. You can find the Facebook page. You can find it on Twitter. There's an email list as well. Anybody who's enthusiastic, please send you can contact us, and we can add you to that email list. And just keep your eyes open for all the activities, and join whatever activities you can in your cities. With that, I want to invite Suhastai with the final closing slogan. So everybody please unmute your mics, and we are going to say the slogan together. And maybe open your cameras too. Yes, and please open your cameras for the final. ये स्लोगन में अभी सरसों का है, इसलिए सरसों का दे रही, जो ओरिजिनल उनसे है, लेकिन जहां दूसरे फसलों का भी नारा देते तो सरसों के बदल कोई भी फसल का नाम दे दो तो नारा इस्तेमाल किया जाता है। मुद्दा है वो स्पिरिट का। तो चलो साथ में स्लोगन देंगे। हाँ चलिए। अरे आज न मांगे काल न मांगे, जीएम सरसों कभी न मांगे। Okay, ready, 1, 2, 3, go. आज न मांगे कल न मांगे, जीएम सरसों कभी न मांगे। आज न मांगे कल न मांगे, जीएम सरसों कभी न मांगे। Okay, thank you everybody. फसल कभी न मांगे, जीएम फसल कभी न मांगे। धन्यवाद। Thank you. So Thanks much. everyone. And heartiest congrats to everyone for the presentation. I would say do emphasize the cancerous effects of it, because these certain words trigger the alertness of government, and it becomes difficult for them to say contradiction. Health hazards, especially the cancer thing, and of course for anti-fertility and all you were saying. Right. Then even inborn disabilities, fetus development, those things should be very strongly enforced. Thank you. Thanks, Suhastai. Thank you, everybody.